fulfills your dream of a great future for your child. With an age-appropriate curriculum refined over 45 years, Narayana schools deliver excellence. Admissions are open for academic year 2024-25. Grab this opportunity by enrolling now. Call us or visit narayanaschools.in. माझं स्वप्न माझ्या कुटुंबाचं नाव मोठं करणं आहे. माझ्या पालकांना भाड्याच्या घरात राहावं लागणार नाही हे सुनिश्चित करण्याचं माझं स्वप्न आहे. आम्ही नारायण आणि तुमची स्वप्न सत्यापित करण्यासाठी आम्ही येत आहोत. बॅगेत वायर आहे आउटपुट घेऊ का आवाज हॅलो. Good evening everyone. We request all the parents to kindly be seated as we are beginning with the orientation program. Coming together is a beginning. Keeping together is a progress. Working together is success. Good evening, ladies and gentlemen. I, Pooja Verma, Academic Dean. And I, Santosh Singh, the Soft Skills and Corporate Trainer, welcomes you to this golden canopy of this institution. I would like to thank you all for managing your time for this auspicious occasion and marking this spectacular evening with your glorious presence. There is a very nice saying in English. Education is not learning the fact, but training of the mind to think. I mean to say, it's a very thought-provoking statement. It gives us an impression that these days education system has changed. Many people, they are working like learning and giving exams, learning and giving exams. The students are busy in learning and giving exams. What is the use of such kind of education? We require such education where the critical thinking, logical thinking of the students can be improved. To run you through more about the educational institution Narayana, Madam is going to run you through the institution. Introduction. It's rightly said that education is integral for growth and development of an individual. The Narayana Group was founded by Dr. Narayana. The journey of Narayana Group of Education began in the year 1979 with the first Narayana Coaching Institute established in Nellore. In the year 1985, first residential high school and junior college was established in Nellore. By the year 1997, multiple Narayana schools and junior colleges were added in Hyderabad, and now it is one of Asia's largest educational conglomerates, where over 50,000 teaching and non-teaching faculties provide a world-class education for more than 6 lakh students spread across 23 states in India.
The goal of Narayana Group of Educations is to improve society and unleash one's potential for humanity. We at Narayana believe that a student's education is complete only when we can contribute to his or her total growth in addition to providing knowledge-based and career-oriented institutions. To make this event the blessed one, let's bow our head together to Goddess Saraswati by kindling the light of knowledge, prosperity and wisdom. 1,000 candles can be lighted from the flame of one candle, and the life of the candle will not be shortened. It's time to commence an event by lighting the lamp of knowledge, wisdom. This is a symbolic moment that signifies the dispelling of darkness and ignition of thoughts and enlightenment. May I request all the dignitaries to take the privilege of lighting the lamp. Please come forward for the esteemed gathering on the stage and mark this event as open. At the same time, I would like to welcome Mrs. Purnima Kulkarni to come up on the stage and sing us into the depths of the music. Akshay. दादा Narayana. As we have lighted up the lamp, now it's time to felicitate our dignitaries who have taken their time out from their busy schedules and have been a part of this event. Firstly, we would like to welcome our DGM, Mr. Ram Mohan Reddy, to step forward, and to felicitate him, we request our AGM, Mr. Karan Dara, and our beloved principal, Mrs. Parveen Jamadar, to come on the dais. काय झालं
owner, Mr. Saudagar Takli, and Mr. Nilesh Zadav come forward, and we request again our AGM and DGM sir to felicitate them with a small token of appreciation. Mr. Nagasai, coordinator of high school segment, to come forward, and we request our principal, Mrs. Parveen Jamadar, to felicitate our guest. Request our next guest of the evening, Ms. Savita from e-Champ segment, to step forward, and we request our AGM, Mr. Karandara, to felicitate our guest with a small token of appreciation. बराबर आहे अगेन्स्ट मारत होतं अरे समोर गेलो होतो माझ्या स्क्रीनला वाटलं या सर समोर May I request to have a huge round of applause? Okay, look here. Smile. It's time to welcome our next guest, Miss Neena, along with Miss Neelam and Miss Anjali from e-Kids segment, to step forward, and we request our principal, Mrs. Parveen Jamadar, to felicitate our honorable guest. क्लोज आहे ना क्लोज Almost. अरे अक्षय क्लोज यायला सांग की Okay. सगळ्यांना करन्सीला घ्या रे करन्सीला घे रे अक्षय करन्सीला बोलाव अरे जवळ येऊ सर, जवळ या. जवळ येऊ Okay. One more. Okay, great. Smile. Thank you so much, Ma. I request all our dignitaries to kindly be seated. Ladies and gentlemen, to set up the context for today's evening and adding more charm to today's evening, we have got a small invocation dance performed by one of the kids. Of course, we need some energy to get the show rolling. So, ladies and gentlemen, I request you to put your hands together for our little performer, Swaragatam, to rock the stage. तार
निर्गुण जय श्रीराम। పిలచిన పలుకబుటలుకపురా కరివరదా మరి మరినా యదనము క్రో కరకణి కరము కరార వేణు గోపాల రార వేణు గోపాల రార వేణు గోపాల రార వేణు గోపాల సొగసిని చేకోరా కోరికలింపొంద బృందముని అంద చేరుని చంత మనువపురా కరములచే మరి మరి నిను శరణని Swara. Let's give a blistering round of applause for our little performer. Without any further delay, let's begin our orientation program. Now is the time to call upon a very dynamic, charismatic personality to the dais. He is the person who personally has inspired many people with his relentless hard works. His passion and burning desire brought him to the position where he is today. He travels across all branches of Narayana to ensure smooth functioning of the organization. We request our DGM Mr. Ram Mohan Reddy sir to please guide us on Narayana system. Good evening, respected parents, children, building owners who are seated here, and dedicated team of Narayana. Good evening, one and all. And I am very happy to announce the launch of Narayana e-Techno School in Solapur. For the better understanding of many of the parents, I will try to speak in Hindi. If there are any mistakes, please forgive me. थोड़ा माफ करना, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स रहेगा तो हिंदी में. For better understanding, I will try to communicate in Hindi. आज सोलापुर आने के बाद इतना खुशी हो रहा क्योंकि it is a cosmopolitan city where the majority of the population are of Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh. ये तीनों स्टेट से मुझे इंटरलिंक है क्योंकि मेरा जन्मभूमि है कर्नाटका, हासन डिस्ट्रिक्ट, एंड आई बिलोंग फ्रॉम आंध्र प्रदेश जो मेरा नेटिव है, जो जन्म हुआ कर्नाटक में. मेरा प्रॉपर आंध्र प्रदेश से हूँ और कर्मभूमि महाराष्ट्र है. ये तीनों स्टेट्स का पॉपुलेशन मिक्सड अप बाय सोलापुर. इधर आने के बाद कुछ पेरेंट्स तेलुगु में बात किया, कन्नड़ा में बात किया. आई कैन स्पीक वेरी गुड तेलुगु, वेरी गुड कन्नड़ा. ये सब देख के मुझे अच्छा लगा. जैसा तीनों भाषा जिधर मैं बात कर सकता हूँ और सभी लोगों से अच्छे तरीक़ा से, क्योंकि बिफोर स्टार्टिंग नारायणा, बिफोर लॉन्चिंग द ब्रांच, आई वॉज नॉट नोइंग दैट द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आर फ्रॉम 3 ऑफ द स्टेट्स. इसके बाद जब पता चला 30% पॉपुलेशन और फ्रॉम तेलुगु बैकग्राउंड, 30% फ्रॉम कन्नड़ा बैकग्राउंड and 40% from Maharashtra, I am very happy because wherever there is the cosmopolitan cities, there the education flourish. Education का बहुत
महत्वपूर्ण रोल रहता है। आज के दिन हम लोगों को 25 के ऊपर ब्रांचेस महाराष्ट्र में है, मोर देन 50 ब्रांचेस इन कर्नाटका एंड मोर देन 200 ब्रांचेस इन आंध्र प्रदेश एंड मोर देन 150 ब्रांचेस इन तेलंगाना। मतलब इसका मतलब क्या है, जो सब जगह पे प्रूव करके आज के दिन हम लोग सभी पेरेंट्स को एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ सर, जिधर भी नारायणा चालू करेगा वी वोंट गिव एनी फ्रेंचाइजी सिस्टम नारायणा में नहीं रहते। जो भी ब्रांचेस हम लोग चलाते हैं ऑन बिहाफ ऑफ नारायणा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, श्रमय जयते इज द लोगो एंड स्लोगन हम लोग खुद चलाते हैं सर। ईच एंड एवरीथिंग इज ऑपरेटेड बाय नारायणा ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और एक चीज़ मैं क्लैरिटी देना चाहता हूँ, आज के दिन आप लोगों को जब काउंसलिंग में आया, कुछ पेरेंट्स एडमिशन लिया, कुछ पेरेंट्स लेना गया है, आज के दिन जो भी आप लोगों को बताया सर, इसका एग्जैक्ट सिस्टम क्लासरूम में क्या चलने वाला है हमारा डेडिकेटेड टीम कोऑर्डिनेटर्स एक्सप्लेन करेगा। इसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, मैं कोई भी प्रयोग करने वाला नहीं हूँ सर। पिछले 45 ईयर से जो हम लोग सक्सेस फॉर्मूला है, जो ऑल इंडिया में जो चीज़ चला रहा, जो सिस्टम चला रहा, वही सिस्टम सोलापुर में चलने वाला है, वही सिस्टम सोलापुर में चलने वाला है। ऑन 45 ईयर्स ऑफ एक्सेलेंस मैं आप लोगों को एक वादा दे सकता हूँ, आपको जो सपना करना है आपका बच्चों के बारे में, आप सपने लेते रहिए, इसको पूरी करने की जिम्मेदारी नारायणा मैनेजमेंट के बिहाफ से मैं ले रहा हूँ सर। आज मैं बात कर रहा हूँ बोलेगा तो इंडिविजुअल रामा मोहन रेड्डी नहीं बात कर रहा, दिस इज द मैसेज ऑफ नारायणा मैनेजमेंट। आप लोगों को जो भी सपना है इसको पूरी करने का जिम्मेदारी हम लोग ले रहा सर। इसका सक्सेस फॉर्मूला एक ही है सर। आज के दिन आपके बच्चे आगे जाके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखना है, जो भी तैयारी करना है, जो भी आगे जाके अगर बच्चे आज के दिन इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, फार्मर बनना है, जो भी बनना है, किस तरीके से सर आज के दिन जो भी एग्जामिनेशन है ऑल इंडिया लेवल और ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म में लड़ना है। इसके लिए आज के दिन जो 23 स्टेट में 230 के अधिक शहरों में जो ऑर्गेनाइजेशन चल रहा, इसका यूनिकनेस एक ही है, कॉमन शेड्यूल, कॉमन टीचिंग, कॉमन एनालिसिस, कॉमन एग्जामिनेशन। इसका पूरी डिटेल हमारा कोऑर्डिनेटर्स बता देगा सर। इसके कारण आज के दिन आपको सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ, अभी फरवरी महीने में एक रिजल्ट आया सर 2023 का जेई मेंस का रिजल्ट आया। आप समझ लीजिए टोटल 14 लाख के ऊपर के बच्चे लिखा, इसमें नारायणा से 70 से 80 हज़ार बच्चे रहेगा नो डाउट। पूरा भारत में 12 बच्चों को 300 आउट ऑफ 300 आया सर। इसमें 6 स्टूडेंट्स नारायणा आए, मतलब 50% ऑफ द स्टेट बिलोंग्स टू नारायणा स्टूडेंट्स। और एक चीज बताता हूँ, आप लोगों को लगता होगा सर आप बहुत अच्छा कहानी सुना रहा, ये पूरा हैदराबाद कर्नाटक से लेके आया हुआ होगा, महाराष्ट्र का क्या है सर? टोटल 1.3 लाख बच्चे ने महाराष्ट्र स्टेट से JEE मेंस लिखा सर। इसमें एक ही 300 आउट ऑफ 300 आया, ये आर्यन प्रकाश है, ये नारायणा स्टूडेंट है। इसका मतलब हम लोग जिधर भी हमारा ब्रांचेस चालू कर रहा, हर ब्रांच से हर स्टेट से अच्छा रिजल्ट ले रहा। आज के दिन वी आर प्राउड टू से वेदर इट मे बी JEE और NEET, 30% ऑफ द स्टेट इन IIT colleges and NEET, that is medical entrance, नारायणा स्टूडेंट्स है। इट्स अ बिग अचीवमेंट ऑफ अस। 2001 में जब हम लोग पहले IIT का कोचिंग शुरुआत किया, वो समय पे खाली 7 रैंक आया था सर। आज के दिन 3000 से 4000 रैंक आ रहा। इसका सक्सेस फॉर्मूला एक ही है, जो बच्चों को स्कूल लेवल से, बच्चों को जो उम्र में जो चीज चाहिए सारे चीज एक छत के नीचे देने वाला ऑर्गेनाइजेशन नारायणा है। और नारायणा आपसे एक वादा ले रहा सर, आज के दिन कोई भी पेरेंट्स इधर को अलग अलग कक्षा में इनके बच्चे पढ़ते हुए होगा, आज से मुझे एक वादा देना है, कोई भी बच्चे कल से कोई भी तरीके से ट्यूशन या क्लासेस जाने की जरूरत नहीं है। आपको जो चाहिए हम लोगों को बोलिए, हम लोग पूरी तैयारी करके देने का जिम्मेदारी हम लोग लेता है। ये सिस्टम कैसा चलता है, क्योंकि नारायणा सिस्टम पूरा समझाने के लिए 1 दिन लगता है सर। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, आई विल इनवाइट
our coordinators to explain the system, जो exact classroom में क्या चलने वाला है, किस तरीका से चलने वाला है, इससे आपका बच्चों को किस तरीका से सुविधा मिलने वाला है। इसके बाद सर आप लोगों को जो भी डाउट्स है, आपका क्वेरीज है, निवारण करने के लिए मैं तैयार हूँ। इसके पहले कोऑर्डिनेटर्स चालू करने के पहले आई इनवाइट परवीन जामदार मैडम प्रिंसिपल टू शेयर हर एक्सपीरियंस and to share our view to the parents. I request Praveen Jamdar Madam Principal of Solapur branch to come on to the dais. और आज के दिन आप लोग वादा देना है, क्लाइमेटिक कंडीशन के वजह से बहुत सारे पेरेंट्स नहीं आया हुआ है, सभी पेरेंट्स को जो भी आप लोग नॉलेज ले रहा नारायण के बारे में ट्रांसलेट करने का। आज से आप लोग यू आर नॉट द पेरेंट्स ऑफ नारायण सर। जो नारायण में जब एडमिशन लिया हम लोग वो पेरेंट्स को सोचता है ये लोग हमारा परिवार है, वी ऑल आर द फैमिली मेंबर्स ऑफ नारायण। आज से नारायण का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को हाथ में दे रहा हूँ, ठीक है? आपका बच्चों का भविष्य हमारे ऊपर, हमारा भविष्य आपके ऊपर। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you very much, sir. It was indeed a very apt orientation to the parents, the beginning. And thank you for calling me, for introducing myself to this august gathering. Sir has already told my name. My name is Mrs. Parveen Jamadar. In a very brief way, I would like to introduce myself to the parent and student fraternity present over here of Narayana family. I hail from Solapur, but just like sir, मेरा जन्मभूमि ये है, लेकिन मेरा कर्मभूमि कर्नाटका था। कुछ टाइम के लिए हैदराबाद भी था। So currently, I am pursuing my PhD in education. I have completed my masters from Shivaji University, Kolhapur. I have also done masters in education from Solapur University. I have completed a degree in MBA with human resource as my specialization. I also hold a degree in law as well and a short degree in diploma in school management. Having overall 24 years of experience, I am still a learner, I believe that, and I am here to represent the Narayana family of Solapur in the entire big family under the umbrella of Narayana. I am very sure that you and we together can create great futures for the young and budding citizens of Solapur. So I wish all the parents and students the very best to my team here who is working with me, and we hope whatever Narayana history is there, we take this legacy ahead and create wonders in time to come when it comes to the education segment of our students' lives. Thank you very much for patient listening. Thank you everyone. Thank you so much, respected sir and ma'am, for setting up the context for today's evening and pumping the audience with energy and trust about Narayana Institution. We really want to get rid of the system, that old pattern of going to school and going to coaching industries. Students get exhausted. We really want to get rid of this situation, and hopefully Narayana is going to help us with this concern. Thank you. So, beginning with the orientation program, now we would like to welcome Ms. Leena to give us in detail information about e-Kids segment. एवढं लावायचे असते ते हो मला माहीत नाही म्हणूनच बोललं जा म्हणून. बाहेरचा पडून कोणता होता Good evening everyone. Good evening dear parents and the entire Narayana fraternity sitting over here. Myself Leena Rajani, coordinator for Maharashtra Zone 1. I am here to explain you about e-Kids program. So let's start with the word e-Kids, which is briefly explained in the next slide. E-Kids is the pre-primary department of Narayana, where children of age group 3 to 5 will be taken care of in different classes. 3 to 5 children in different classes will be coming over here in e-Kids, and we will ensure their holistic development. As we talk about 3 to 5,
which is commonly called as pre-primary. We all know the word pre-primary, parents? This will be an interactive session parents. Please cooperate in answering. If you have the answer to my questions, please raise your hand. And if you agree to what I am saying, again raise your hand. Let's talk about why pre-primary education is important, which is given in the next slide. Pre-primary education क्यों? क्या जरूरत है एक 3 ईयर के बच्चे को स्कूल जाने की? I will give you some reasons. अगर आपको लगता है जो मैं बोल रही हूँ वो सही है तो प्लीज रेज योर हैंड, ओके? मेरे बच्चे को स्कूल जाके और बच्चों से मिलकर सीखने की जरूरत है. इज इट राइट? थैंक यू. मेरे बच्चे को टीचर्स के सपोर्ट की जरूरत है फॉर देयर ग्रोथ. स्कूल जाने से बहुत अच्छी पढ़ाई होगी मेरे बच्चे की. सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी. ओनली पढ़ाई. डू वी वांट ओनली पढ़ाई फॉर द चिल्ड्रन? वी आर इन दिस ईयर 2024. Now the era has changed. Times have changed. School will not only take care of the education part, it will also take care of the entire grooming of the child. Which is given over there is competent curriculum. एक ऐसी चीज जो कंपटीशन बीट आवर चिल्ड्रन जिन्हें हम ग्रूम करेंगे वो भी एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में खड़े होने के लिए तैयार किए जा रहे हैं. So coming to Narayana's curriculum, that is competent because we have a team sitting there in central office in Hyderabad. This team comprises of many people. They are working together to bring a curriculum to every branch of Narayana. Across pan India, we have 700 plus branches. Ensuring that जो पढ़ाई महाराष्ट्र को चाहिए वो महाराष्ट्र को मिल जाए, जो कर्नाटका को चाहिए कर्नाटका को मिल जाए, जो उड़ीसा को चाहिए उड़ीसा को मिल जाए. And every state's requirement को देखते हुए कौन से दिन कौन सा टॉपिक पढ़ाना है उसका एक बुकलेट बनता है. सो अगर बच्चे 3 जून से स्कूल में आएंगे तो 3 जून को टीचर उस दिन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाएगी, उसमें बुक के कितने पेजेस करवाएगी, कितनी एक्टिविटीज़ करवाएगी, कितना टाइम पढ़ाई से अलग एक्टिविटीज़ होगी, ये सब आता है माइक्रो शेड्यूल में. माइक्रो शेड्यूल आप सबके पास अपनी कॉपी रहेगी. एवरी पेरेंट विल गेट अ कॉपी. एवरी टीचर विल गेट अ कॉपी. अगर आपका चाइल्ड किसी दिन एब्सेंट है तो आप माइक्रो शेड्यूल को रेफर करके समझ सकते हैं कि आज क्या पोर्शन हुआ. और एब्सेंट नहीं भी है तो माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, रेगुलरली माइक्रो शेड्यूल में देखते रहिए कि स्कूल क्या पढ़ा रहा है. अक्रॉस पैन इंडिया अगर लेटर ए का इंट्रोडक्शन 5 क्लासेस में होगा तो सारे स्टेट्स में वो 5 क्लासेस में 700 प्लस ब्रांचेस में होगा. Dates will vary. State wise holidays अलग होती हैं इसलिए dates will vary, but schedule of teaching will remain the same. Next point which is given over here is child centric approach. मेरा बच्चा मेरी बात मानता है. How many of you believe in this? मेरा बच्चा मेरी हर बात मानता है. One parent. मेरा बच्चा वो करता है जो मैं करता हूँ. मुझे देख देख के कॉपी करते हैं. How many of you have seen this? Maximum people. मेरे बच्चे को ना चीज़ें मिल जाए बस बहुत सारी, उसके साथ ऑक्यूपाइड हो जाता है, फिर उसको किसी की ज़रूरत नहीं है. Right? There are different
different children in the environment. किसी को सुन के समझ में आता है, किसी को देख के समझ में आता है, किसी को कर के समझ में आता है, किसी को इन्वॉल्व हो के समझ में आता है, और किसी बच्चे को जब तक आप फील्ड ट्रिप पे नहीं लेके जाओ उनको टॉपिक ही नहीं समझ में आता है. So our curriculum is child centric. हर बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको पढ़ाया जाएगा. That's what child centric means over here. The last point on this slide is continuous assessments. Continuous assessments doesn't mean कि मैं आपको हर हफ्ते हर महीने एक रिपोर्ट कार्ड दे दूँगी. No. But teachers and the classroom regularly will assess the children. Understand कि मैंने 2 letters का introduction करवाया, बच्चों को वो समझ में आया कि नहीं आया. Can I go to third letter or not? If not, suppose a classroom of 25 is there और 5 बच्चों को first 2 letters नहीं समझ में आए, then teacher will pick up those 5 children and teach them separately अलग से. That we call as continuous assessment, जहाँ पे हम चेक करते रहेंगे कि बच्चों को सब कुछ समझ में आया कि नहीं, और अगर नहीं समझ में आया तो उसको कितनी बार और कितने टाइम तक कैसे कैसे पढ़ाना है. एंड टीचर्स उस टॉपिक को बार बार रीइंफोर्स करेंगे इन द चाइल्ड्स माइंड. यहाँ पे ये भी हो सकता है कि टीचर्स आपको कॉल करके बोले कि योर चाइल्ड नीड्स सपोर्ट इन एक्स टॉपिक, वी नीड योर हेल्प, आप घर पे ये एक्टिविटी आज उसको करवाएंगे. सो योर सपोर्ट as a partner into the development of the child will be sought as and when required. As we move forward, when we spoke about e-kids age group 3 to 5, the next slide will give us details of 3 classes which we teach in Narayana. Bud, Bloom, Blossom. These are the names given by Narayana. जैसे pre-primary को e-kids, वैसे ही nursery class in Narayana is called as Bud, PP1 as Bloom and PP2 as Blossom. Nursery's age group is 3 onwards, Bloom PP1 4 onwards and PP2 5 onwards. इस एज क्राइटेरिया के बेसिस पे ही आप लोगों के एडमिशन्स लिए गए हैं, and then children will also be taught according to this. जेरोम ब्रूनर एक रिसर्चर थे many years ago, जिन्होंने अपनी रिसर्च में ये बोला था कि बच्चे का माइंड स्प्रिंग के जैसा होता है. स्प्रिंग कैसी होती है? एक ही रोटेशन में घूमती रहती है. तो आपको जब बच्चे को पढ़ाना है तो आपको स्पाइरल करिकुलम प्रोवाइड करना है. स्पाइरल करिकुलम वो होता है जिसमें आप एक टॉपिक पढ़ाते हो और उसी टॉपिक को घुमा के सारे टॉपिक उसके साथ वीव करके पढ़ाते हो. इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ, जैसे जनरल अवेयरनेस में माई सेल्फ का टॉपिक होता है. नर्सरी क्लास जब माई सेल्फ सीखता है तो वो सिर्फ इतना सीखता है माई नेम, माई पेरेंट्स नेम, माई फादर्स नेम, माई पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जितनी उनकी कैपेसिटी है 3 year old. PP1 को हम फिर से माई सेल्फ पढ़ाएंगे विथ मोर इन्फॉर्मेशन इनटू इट, एंड PP2 को हम फिर से माई सेल्फ पढ़ाएंगे विथ इंटरनल ऑर्गन्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन इनटू इट. That's how the curriculum is moving around in the same topic and we are creating more information. इसी me and my world में myself, my parts of the body, fruits, vegetables, healthy eating habit, people in my community, सब आ जाएगा because it all relates to me as an individual. Moving forward, the next slide talks about the salient features of Narayana curriculum. जब प्री प्राइमरी स्ट्रक्चर बना था फर्स्ट टाइम, फ्रेडरिक फ्रोबेल, द फादर ऑफ द किंडरगार्टन, जिन्होंने फर्स्ट किंडरगार्टन स्टैब्लिश किया था, तब बहुत सारे रिसर्चेस आए थे उनके किंडरगार्टन के बेस पे. एक रिसर्च आया था इंक्वायरी एंड प्ले बेस्ड. इंक्वायरी बेस्ड करिकुलम वो होता है जिसमें आप बच्चे को क्या आता है पहले वो इंक्वायर करते हैं और उसके इंफॉर्मेशन के बेस पे उसको आगे बढ़ाते हैं. दैट इज इंक्वायरी बेस्ड करिकुलम. प्ले बेस्ड करिकुलम वो जिसमें आप गेम्स, एक्टिविटीज़, फन एंड प्ले के मेथड से बच्चों को पढ़ाते हो. इन नारायणा वी एंगेज आवर चिल्ड्रन विद एक्टिविटीज़ which take care of inquiry and play based curriculum. So you please don't get afraid अगर आपके बच्चे घर आके आपसे रिटर्न में कुछ questions पूछें, because that will be given by the teachers to the child as a part of their learning process. We do have lot of activities which talks about peer interaction, peer
peer as in your friends. You have to sit with your friends and interact and discuss and come to a conclusion on certain topic, or discuss and talk about certain things. Then we talk about foundational literacy and numeracy. As pre-primary structure has become lucky this year that National Education Policy has added pre-primary into the policy. But National Education Policy this time talks about two things as very important in pre-primary, which is foundational literacy, that is communication skills and reading skills, and numeracy, basic maths and logical skills. इस पे सबसे ज़्यादा weightage दिया जाना है with experiential learning. So experiential learning means आपको बच्चे को real life experiences देने हैं. तो अगर घर आके बच्चे किचन के ड्रॉर में से आपको प्लेट निकाल के बोले कि दिस इज सर्कल इन शेप और मुझे ये घर स्कूल लेके जाना है क्योंकि मैम ने बोला है कि ढूंढ के लाओ घर में सर्कल शेप क्या है, तो प्लीज अलाउ देम बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग. द नेक्स्ट पॉइंट टॉक्स अबाउट फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स. Fine and gross motor skills are the words given to us by Maria Montessori. Fine are these parts of your body. This where the child holds the pencil and these folds on the fingers where we have small muscles. We also have small muscles in our eyes, ears, nose and mouth. All our sensory organs have fine muscles. So we do activities which develop the fine motor skills in the child. जहाँ से बच्चों का pencil holding things in their hand will become stronger. As a part of a small activity which parents can do at home, आप अपने घर पे आटा गूंथते हैं, kneading of dough होता है, प्लीज़ उसका एक बॉल बच्चों के हाथ में दे दीजिए to play with it. आप हल्दी, बीटरूट, स्पिनाच डाल के उसको मल्टीपल कलर्स के डो में कन्वर्ट कर दीजिए और बच्चों के हाथ में वो छोटे छोटे बॉल्स दीजिए टू प्ले विद इट. उससे कैट, डॉग, स्नेल सब फॉर्म हो सकता है विच द चाइल्ड कैन मेक इफ यू अलाउ देम टू प्ले विद द डो. समटाइम्स यू कैन गिव सूखा आटा टू द चाइल्ड विद वाटर एंड टीच देम टू नीड द डो विद यू. गूंदना सिखाइए. जो प्रेशर पड़ता है उससे फाइन मोटर मसल्स डेवलप होती हैं. फोल्डिंग ऑफ क्लोथ्स, नैपकिन फोल्ड करना, टी शर्ट्स फोल्ड करना, पैंट्स फोल्ड करना, ये सब छोटी सॉक्स को रोल करके रखना. दीज आर स्मॉल थिंग्स जो बच्चे घर पे कर सकते हैं इन ऑर्डर टू डेवलप देयर फाइन मोटर स्किल्स. व्हेन इट कम्स टू स्कूल में हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम उनसे फाइन मोटर एक्टिविटीज़ करवाते हैं. When we talk about gross motor is all the large muscle in your body. So hand, legs, all the big muscles in the body. For that we have dance, sports, music, jumping, balancing beam, many more activities which a child can do. घर पे आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अपने सुपरविजन के अंडर बच्चों को बेड पर और सोफा पर जंप करना अलाउ करिए. We stop them because we are worried कि वो गिर जाएंगे, लेकिन जब तक वो जंप हॉप स्किप नहीं करेंगे उनकी ग्रॉस मोटर मसल्स भी डेवलप नहीं होंगी. सो आज से प्लीज़ थोड़ा टाइम अलाउ देम टू डू व्हाट दे वांट टू डू एंड हाउ दे वांट टू डू इन योर सुपरविजन ताकि उन्हें चोट ना लगे. Going to the next slide which talks about the different things which we will be developing in the child. There are 10 things mentioned over here which we will be instilling in the child. Nurtures curiosity. जैसे मैंने आपसे कहा कि बच्चे घर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे क्योंकि हम उन्हें उन क्वेश्चंस के साथ भेजेंगे और नेक्स्ट डे उन क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे. बूस्ट कॉग्निटिव स्किल्स. जहाँ पर भी जब भी आपको कोई भी बोले कॉग्निटिव डेवलपमेंट, प्लीज अंडरस्टैंड कॉग्निटिव मीन्स माइंड, concentration, attention, linking one or two things together, that is cognitive skills. Boost confidence. There are many times when child will come on the stage, hold a mic and talk, recite rhymes, talk about the objects in their environment, participate in competitions, conduct assembly so that we can boost their confidence. As we move forward, we will also ensure that we develop social and emotional skills. Social talks about society. Society doesn't only mean my parents or my friends or my siblings. Society means different people who help
in the society. Society means different people whom I meet in the society. So when I go to a mall with my parents, I meet many more people in the mall. I meet a person who's the cashier, I meet a person who helps me take out my things, I meet many people in the environment who are shopping with me. Everybody's requirement is different. So social development मतलब friends बनाना नहीं, only friends बनाना नहीं, involving with the entire society. We all as adults feel happy जब हमारे बच्चे environment में clear answer दें, अच्छे से बात करें, right? Am I right here? So that is the kind of development which will be done. The next is encouraging patience, which is very important, which everybody lacks nowadays. And instilling patience is a time-taking task. So we do some activities which is a gradual process to develop patience in the child. The next in my list is improving child's concentration. जो आजकल के पेरेंट्स में से बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि मेरा बच्चा तो सुनता ही नहीं, राइट? ध्यान ही नहीं देते, कितनी बार एक ही बात बोलनी पड़ती है. Am I right here? How many times we repeat our instructions? We will have to do that. Please understand, till the age of 7 बच्चे का attention span कम होता है, इसीलिए स्कूल्स एक्टिविटीज़ करवाते हैं. तो अगर जब आपको लगता है ना कि मैंने एक इंस्ट्रक्शन 5 टाइम्स दे दिया फिर भी मेरा बच्चा नहीं सुन रहा है, तो बस अभी एक जोर का चाटा वो नहीं होना चाहिए. अंडरस्टैंड कि अटेंशन स्पैन लो होता है, उस हिसाब से हमें करवाना है. सो आपको 10 टाइम्स भी इंस्ट्रक्शन देने पड़े, प्लीज़ पेशेंटली दीजिए. और एक चीज़ कीजिए, जब आप सेकेंड टाइम बता रहे हैं तब उसको याद दिलाइए कि मैंने आपको थोड़े दिन पहले ये बात बताई थी. जब आप थर्ड टाइम दिला रहे हैं तब आप उसको फिर से याद दिलाइए, तो उसका मेमोरी स्पैन स्ट्रॉन्ग होगा, बिकॉज द चाइल्ड विल सिट एंड थिंक. आप उसकी मेमोरी पे काम करेंगे. So instead of getting angry, please start working on the children in a different manner. Makes the child a lifelong learner. That's why we will come to you with lot of activities so that you understand what Narayana is doing and child becomes lifelong learner. Prepares the child for future competencies. As we all know, Narayana is famous for IIT and JEE, right? So we from e-Kids department will ensure that the child is prepared properly so that they can stand over there. As we move forward, the next slide which talks about our methodologies, the different methodologies of Narayana which we talk. Usme the first point is our curriculum. We have named our curriculum as Fondre. Fondre is a German word जिसका मीनिंग है एन अमलगमेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस. बेस्ट प्रैक्टिसेस को कंबाइन करके बनाया हुआ, इसलिए फॉन्ड्रे. व्हेन वी टॉक अबाउट फॉन्ड्रे, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू माइक्रो शेड्यूल, द बुकलेट विच यू विल गेट विच इज अ डेली करिकुलम. टीचर्स फ्रॉम सेंट्रल ऑफिस गेट्स लेसन प्लान्स. मतलब अगर आपको लेटर ए इंट्रोड्यूस करना है तो लेटर ए कितने क्लासेस में होगा. फर्स्ट क्लास में आप एप्पल दिखाएंगे कि सेकंड क्लास में एप्पल दिखाएंगे. एप्पल टेस्ट कब करवाना है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कैसे देनी है, टच एंड फील कैसे करवाना है. इंट्रोडक्शन स्टोरी फॉर्मेट में होगा कि फ्लैश कार्ड्स के फॉर्मेट में होगा. ये पूरी डिटेल लेसन प्लान्स में डिटेल रहती है एंड टीचर्स आर ट्रेन्ड टू रीड दैट एंड फॉलो दैट. कंटिन्यूस असाइनमेंट्स, आपको रेगुलरली माइक्रो शेड्यूल में होमवर्क आएगा. नॉट फॉर नर्सरी, PP1 एंड PP2. सो अगर मैंने लेटर ए लिखवाया है, सो 4 लाइन्स आई विल मेक द चाइल्ड राइट. नेक्स्ट 2 लाइन्स विल कम टू यू एज होमवर्क, so that you also understand where is my child standing. So on day 1 if you feel कि oh teacher has made the child write letter A 4 times और मेरे सामने तो एक भी लाइन नहीं लिख रहा है, please connect to the teacher rather than forcing the child to write. Teacher will help the child do it properly with her supervision. So for you to have a constant vision towards what we are doing in the school and a tap on the child's learning, there will be continuous assignments sent to you. As we talk about lot of values which will be instilled in the children,
we talk in the next slide that we are committed to shaping young minds by instilling these values: honesty, respect, politeness, sharing and caring, empathy, cooperation, kindness and responsibility. ये all the values बच्चों में already है. एक बच्चा जब born होता है तो उसको dishonesty नहीं पता होती, उसको एम्पैथी भी मीनिंग नहीं समझ में आती, लेकिन वो एनवायरनमेंट देख देख के सीखते हैं. ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, एम्पैथी, पोलाइटनेस सब एनवायरनमेंट से बिल्ड होता है. अगर मेरा एनवायरनमेंट पोलाइट एंड काम है तो ऑटोमेटिकली मैं पोलाइट एंड काम रहूँगा. बट there are many places where environments are different. So we have a lot of activities which will help the children develop these values with parental support. And when I am talking so much कि हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, इसके लिए one word which is given in the next slide is holistic development, overall development, complete development. Academic, physical, social, emotional, psychomotor, spiritual and moral, all the developments our curriculum will take care of in Narayana. As we move forward, I will explain all these development one by one. Cognitive, as I said, mind. Concentration, attention, logical thinking. So there will be many activities which will happen in the school where the child is required to concentrate. सबसे common activity of concentration which we all know is yoga. Yoga develops a lot of concentration. ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे academic activities भी हैं which develops a lot of concentration. हमने सबने न्यूज़पेपर में वो activity देखी होगी. Errors in the picture, दो same pictures दिए रहते हैं, find out what is missing. Those are small activities जो आपका concentration develop करते हैं, आपकी logical thinking develop करते हैं. ऐसी और बहुत सारी activities which are there in our academic curriculum, वो cognitive developments में will be done in the school. As we move forward, we talk about language development. Language means communication, listening and speaking. Doesn't only mean English. When children will come in nursery, the teachers will speak to them in English and Hindi mixed so that the child can understand. As they move forward, the blend of English and Hindi will increase and decrease in PP1. But in PP2, along with the Hindi and regional language support, we will ensure that the child learns to communicate complete sentences in English so that they are able to read and write. For that, we have a lot of activities which will be explained to you in the further slides. As we move forward, we talk about psychomotor development, which is again the same fine motor and gross motor development. In this, there is one addition which is psychological. Your physical and psychological development together. So you will be given a target to achieve. जैसे races में होता है कि you have to run and go and bring that thing. A target with that capacity to achieve. So there will be many games and activities which will be happening in the school to develop the psychomotor development of the child. As we move forward, socio-emotional development. Social, my entire society. Emotional, I understand. Today I am sad. Tomorrow I am happy. Today I am excited when I have to go to the picnic. Today I am not happy that my teacher did not give me a star. All these emotional developments and along with being into the society will be taken care of in the Narayana structure. As we move forward, in the next slide, we talk about spiritual and moral development. Before I explain you the spiritual and moral development, I have a question for all the parents. गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट होती है यहाँ पे? हम कितने दिन के लिए लॉर्ड गणेशा को अपने घर लाते हैं? 10 days के लिए, राइट? क्यों लाते हैं? क्यों लाते हैं? क्या स्पेशल होता है जो हम लॉर्ड गणेशा को 10 days के लिए अपने घर लाते हैं? Anybody has the answer to this? Please raise your hand. Is it Lord Ganesha's birthday?
लॉर्ड गणेशा का बर्थडे होता है? नहीं होता है. यू आर सेइंग यस, नहीं होता है. Okay, we all know Lokmanya Tilak started this ritual to support the freedom movement, right? How many of us we know that Lokmanya Tilak started this movement? But Lokmanya Tilak ने Lord Ganesha को 10 days के लिए क्यों लाया? Yes, ma'am. You have the answer? Do we have a mic to give to ma'am? Ma'am, if you can raise your hand. Yeah. में लोकमान्य तिलक ने इसलिए गणेशा को लाया कि जब सोशल लोगों में जब अपने अपनों में कुछ बनती नहीं थी, तब सब लोग बाहर आके मिलजुल कर अपना ये जो समाज में जो रूढ़ी परंपरा है वो अच्छे से मिलकर मनाए, और उसकी वजह से सब हंसी खुशी से अपने देश में अच्छे से रहे. इसीलिए उन्होंने सेलिब्रेशन स्टार्ट किया था. उसके बाद उन्होंने शिव जयंती भी स्टार्ट की थी. अग्रीड मैम. लॉर्ड गणेशा ही क्यों? विष्णु क्यों नहीं, शिव भगवान क्यों नहीं, पार्वती क्यों नहीं, लक्ष्मी क्यों नहीं? सिर्फ लॉर्ड गणेशा के लिए 10 डेज क्यों बनाए हैं? मैम उस टाइम में जब गणेश चतुर्थी के दिन वो जब बिठाया जाता था तो वो सब अपने अपने घर में बिठाते थे, लेकिन ये बाहर आने के बाद सब मिलजुल कर मनाएंगे, इसलिए उन्होंने यही चुना था. अग्रीड मैम. फ्रीडम ऑफ इंडिया के मूवमेंट के लिए हुआ था. माई पॉइंट रिमेन्स द सेम. लॉर्ड गणेशा ही क्यों, कोई और भगवान क्यों नहीं? यस सर. यस मैम. मैम यू वांट टू से समथिंग? कि वो शिक्षा जो अपना जब एजुकेशन के भगवान माने जाते हैं, इसी वजह से. फाइन मैम. सर that sir wants to answer it. No? Okay. Anybody has an answer to this कि Lord Ganesha क्यों? मराठी 14 विद्या आणि 64 कलांची देवता गणपतीला मानलं जातं, त्यामुळे त्यांची प्रतिष्ठापना करून पूजा करतात. ओके, थैंक यू मैम. मैं आप लोगों का इसका आंसर देती हूँ. हम सब ने महाभारत पढ़ी है. यस, महाभारत सीरियल देखा है. We all know the story. महाभारत was written by Lord Ganesha. जब ऋषि वेद व्यास को वो महाभारत लिखनी थी, जो वो लिख नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने लॉर्ड गणेशा से हेल्प मांगी थी कि मुझे महाभारत लिखने के लिए हेल्प कीजिए. और ये पूरा प्रोसेस जिसमें ऋषि वेद व्यास महाभारत बता रहे थे और लॉर्ड गणेशा लिख रहे थे, वो 10 डेज का प्रोसेस था. और उन 10 डेज में लॉर्ड गणेशा की बॉडी फ्रीज हो गई थी, क्योंकि एक जगह पे बैठे बैठे लिखना, तो वो अपनी नॉर्मल स्टेट पे नहीं थे. आफ्टर 10 डेज उनको उनकी नॉर्मल स्टेट पे लाने के लिए ऋषि वेदव्यास ने बहुत सारा पानी डाला था उनके पास. इसलिए हम 11th डे पे लॉर्ड गणेशा को पानी में इमर्स करते हैं. दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड टू रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स ऑफ लॉर्ड गणेशा इन हेल्पिंग ऋषि वेदव्यास टू गिव अस एन एपिक कॉल्ड महाभारता, जहाँ से हमारी सबसे ज़्यादा लर्निंग्स ऑफ लाइफ है. गीता वहीं से आती है. दिस इज द रीज़न वाई महाभारता. सो व्हेन योर चाइल्ड कम्स एंड आस्क यू दिस क्वेश्चन, यू शुड हैव द आंसर, बिकॉज हम इतना डिटेल्ड पढ़ाएंगे. वी विल नॉट टेल देम कि लॉर्ड गणेशा के बर्थडे पे हम 10 डेज के लिए लॉर्ड लेके आते हैं. And I will leave you with one more question. हम सबको पता है कि अयोध्या से राम आए थे, इसलिए दिवाली होती है. मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर नहीं दूंगी. आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए. अगर राम आए थे अयोध्या में और दिवाली मनानी थी, तो हम लक्ष्मी जी की मूर्त क्यों लेके आते हैं और राम की मूर्त क्यों नहीं लाते अपने घर में? हर साल हमारे घर में दिवाली पे लक्ष्मी जी की मूर्त आती है और उनकी पूजा होती है, लेकिन अयोध्या में तो राम वापस आए थे. Where is this Lakshmi origin? So I will leave you with this question. Please understand what is the reason. If we will teach culture and ritual to the child, हम पूरा detailed पढ़ाएंगे with clarity. That is what is Narayana's curriculum. In the next slide, we will talk about an embellishment program. As we talk about an embellishment program, this program has 6 activities which are explained over there. One by one we will talk about this. जब नारायणा ने देखा
था कि मैं A to Z पूरा पढ़ा रहा हूँ, करिकुलम कंप्लीट कर रहा हूँ, पर मेरे बच्चों के डेवलपमेंट में कुछ तो मिसिंग है. So they started with this program. This program has 6 different activities. One is Giggles Enrichment, जहाँ पे आपको एक बच्चा फ़ोन के साथ दिख रहा है. ये एक्टिविटी आपको every Friday N-Learn ऐप पे मिल जाएगी, which you will all have credentials of. उस ऐप पे सैटरडे और संडे में से एक दिन 1 hour आपको चाइल्ड को देना है to do this activity with you. This is the time when parent and child work together to develop the child apart from academics. इसमें आपको ABCD और 1 2 3 नहीं मिलेगा. ये जो एक्टिविटीज़ होगी इसमें कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल जितने डेवलपमेंट्स मैंने आपको अभी बताए वो होंगे. तो देन यू विल ऑल्सो गेट क्लैरिटी कि हम ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे बच्चे की डेवलपमेंट होती है. द नेक्स्ट इज रीडिंग माइंड्स. इस एक्टिविटी में एवरी डे 1 PPT कम्स फ्रॉम सेंट्रल ऑफिस. वो PPT हम बच्चों को क्लास में रीड करवाते हैं टू डेवलप देयर रीडिंग स्किल्स. इफ़ यू टॉक अबाउट रीडिंग स्किल्स तो ABCD पूरा होने से पहले भी एक बच्चा रीड कर सकता है. आप में से जिनके पास 3 year old 2 year old चिल्ड्रन हैं, एक स्मॉल एक्टिविटी कीजिए. आज एक स्टिकर शीट लीजिए और अपने घर की हर चीज़ को लेबल कर दीजिए. बेड के ऊपर बेड का स्टिकर लगाइए, मिरर के ऊपर मिरर का स्टिकर लगाइए, डोर के ऊपर डोर का स्टिकर लगाइए, विंडो के ऊपर विंडो का स्टिकर लगाइए और बच्चे को बोलिए ये इस चीज़ का नाम है, मैंने लिखा है. और 10 days के बाद वो स्टिकर्स पलटा दीजिए. विंडो के ऊपर मिरर लगा दीजिए, मिरर के ऊपर विंडो लगा दीजिए. और बच्चे ने आपको आके नहीं बोला कि मम्मा ये गलत है, क्योंकि रीडिंग के लिए आपको ये नहीं जानना है कि ये लेटर W है और इसी से विंडो आएगा. रीडिंग के लिए आपको वो इमेज ऑफ विंडो एज अ साइट रीडिंग अपने माइंड में लेनी है. इसलिए बोलते हैं रीडिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए बहुत सारा रीड करो ताकि आपकी इम्प्रेशन में वो वर्ड्स फॉर्म हो जाए. सो दीज आर स्मॉल एक्टिविटीज़ विच इन नारायणा क्लासरूम्स ऑल्सो यू विल सी. आप जब क्लासरूम में आएंगे आपको डोर, विंडोज, एवरीथिंग विल बी लेबल्ड. And along with the environment labeling, there will be reading minds PPT to develop the reading skills of the child. As we move forward, we talk about a lot of social and emotional development. There are learning ladders. Once in a week, ये activity जो आपको बच्चे करते हुए दिख रहे हैं, to develop their psychomotor, social emotional development. Once in a week, entire class will come together and perform activities. That is our Learning Ladders program. Next we have Learnopedia. These are worksheets जो आपको every week आपके child के folder में मिल जाएगी, which will develop their reading, listening, speaking skills. So there will be one worksheet, 1 week given to the child. Next we have Kinder Tech. As NEP 2020 is into action now, Kinder Tech talks about coding. अब अगर मैं कोडिंग बोलूँ तो कोडिंग मीन्स मेकिंग ऐप, राइट? हाउ मेनी ऑफ वी नो दैट कोडिंग इज रिक्वायर्ड टू मेक ऐप्स? इतने छोटे बच्चे ऐप्स बना सकते हैं? पर एक ऐप बनाने के लिए कितने डिफरेंट टाइप ऑफ लोग उसको यूज़ करेंगे, उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, उसको समझने की जो स्किल है वो हम अभी से डेवलप कर सकते हैं. एक टारगेट तक पहुंचने के लिए मुझे और कितने पैरामीटर्स को कंसिडर करते हुए जाना है, ये हम उनको सिखा सकते हैं. सो वी हैव किंडर टेक एक्टिविटीज़ जो उनकी बेसिक कोडिंग थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करेगा. एज वी मूव फॉरवर्ड वी हैव थिंकर स्पेस. This is again going to come to you every week in the app, interactive activities for the child to do with you to develop their cognitive skills. As we move forward, this year Narayana is initiating with STREAM activities: science, technology, engineering, reading, arts and maths. STREAM होगा every month and 1 day, 1 full day, 4 hours STREAM activity. स्ट्रीम में जितना पूरे मंथ में हमने उन्हें पढ़ाया है उस सारे सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स को मिला के 1 full day का एक एक्टिविटी होगा जहाँ सब रिवीजन भी हो जाएगा और वो चीज़, वो टास्क को कंप्लीट करने में उनका कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल डेवलपमेंट भी हो जाएगा. दैट इज़ वाई वी हैव इनिशिएटेड स्ट्रीम, बिकॉज वी टॉक अबाउट इंटीग्रेटेड करिकुलम. As we move forward, we have also integrated art
into our curriculum. Art integration. Art doesn't only mean drawing. Drawing, coloring, arts and crafts से अलग भी और arts होते हैं. Dance is a form of art. Music is a form of art. Drama is a form of art. All these arts will be integrated into our curriculum to ensure the holistic development of the child. The next slide will talk about oratory maestro. मैंने बोला था आपको कि language developments की activities I will show you. These are the different language development activities which will be done. Rhyme recitation, completion, pick and speak, कहानियों का कारवा, spell bee competition to develop the language skills of the child. Children will come so many times on the stage, participate in many competitions to ensure that they are developed completely. As we move forward, NutriQuest. सब कुछ हो सकता है. Without eating, nothing is possible. Healthy mind resides in a healthy body. So Narayana will not stay away from giving you a meal to send to the child, but हम आपको daily menu नहीं देंगे. Every Monday and every Thursday, you will be given a specific menu to send to the child in their bag. Monday and Thursday, 2 days of the week. बाकी सब दिन आप अपनी चॉइस का फूड भिजा सकते हैं, बट माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू इज़ कि मेरा चाइल्ड अगर 1 चपाती खाता है तो टिफिन में 1 ही चपाती भेजना, 2 नहीं. क्योंकि हेल्दी फूड खाने के साथ साथ ये सीखना भी ज़रूरी है कि मेरे प्लेट में जो सर्व हुआ है आई नीड टू रिस्पेक्ट इट एंड फिनिश इट रादर देन वेस्टिंग फूड. ये वेस्टिंग फूड की हैबिट आई एम सॉरी टू से बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पेरेंट्स. दोज हू फील कि पेट नहीं भरा होगा, मैं थोड़ा और खिला देता हूँ, मैं थोड़ा और खिला देता हूँ, मैं थोड़ा नहीं. लेट देम फील हंग्री एंड कम टू यू कि मुझे हाफ चपाती और खानी है. दैट इज माइंडफुल ईटिंग. वॉट वी आर डूइंग इज फोर्स्ड ईटिंग, जिसमें बच्चों को खाना पसंद नहीं आता. सो योर टिफिन शुड गिव द क्वांटिटी जो बच्चा खा सकता है. Don't send extra food. And NutriDeal and Slice-O-Munch, Monday and Thursday, please send the food which we are telling you to send. The entire year's meal will come to you beforehand, तो आप beforehand plan करके रख सकते हैं. The next slide talks about the core instructional material, जो सेंट्रल ऑफिस से ब्रांचेस को और पेरेंट्स को मिलेगा. This consists of books, enrichment books, pitch books. इसमें एक जेरी बूस्टर पैक लिखा है विच इज़ अ हॉलीडे होमवर्क बुकलेट जो आपको 3 times in a year मिल जाएगी. दिवाली ब्रेक, क्रिसमस ब्रेक, समर ब्रेक, 3 times in a year, 3 small booklets. आपके पास पूरा वेकेशन रहेगा टू सिट एंड मेक द चाइल्ड डू इट. दिस इज टू ensure that the child is engaged learning something concrete at home. Then there is a diary which is a parent communication tool. Homeworks will be written in the diary. Teacher will write their messages in the diary. And if you as a parent want to ask something to the teacher, you can also write it in the diary. And when we write diary, right from day 1, let us train the children to come home and tell you that teacher has written a circular in the diary. When you are writing a circular, please tell the child कि मैंने मैम के लिए नोटिस लिखा है, please ask ma'am to read it. Let's make our children alert and aware about what we are talking about them. They should be aware about this. There is one magazine called as Tiny Toes magazine, which you will get twice in a year from Narayana, semester 1 and semester 2. This magazine will include pictures of various activities across pan India. आप देख पाएंगे कि कितने schools हैं और क्या क्या कर रहे हैं, and some small activities for the child to do. As we move forward, the next slide talks about integration of multiple resources. Regional language, literacy, numeracy, general awareness, Hindi, rhyme, stories, art and craft. इतनी books नहीं देंगे हम आपको. We will give you 7 books. 7 books में से each book will have literacy, numeracy, GA, rhymes and stories. Integrated curriculum. ये 7 books पूरे साल भर का portion है जो थोड़ा थोड़ा करके करवाया जाएगा. Teacher will take all the 7 books and keep with them.
So 5 subjects की books, उसके बाद 1 separate book for art and craft and 1 separate book for regional language, which is Hindi over here. So Hindi book will be separated over here. That's how books will be given to you. As we move forward, the day does not start without assembly in Narayana, pre-primary assembly schedule. Schedule के हिसाब से there are many prayers जो हर स्कूल में होती है. नारायणा में क्या अलग होता है कि एवरी डे हम एक एक्टिविटी करते हैं इन द असेंबली. जो इतना सारा होलिस्टिक डेवलपमेंट मैंने आपको बताया वो असेंबली से ही स्टार्ट होता है. एवरी मंडे वी डू योगा विद द चिल्ड्रन. एवरी ट्यूसडे वी डू साइंटिफिक टेम्पर. साइंस तो उनका सब्जेक्ट नहीं है, पर अगर मैं एक टब ऑफ वाटर ले लूँ और उसमें एक लीफ और एक स्पून डाल दूँ तो लीफ ऊपर फ्लोट करेगा और स्पून नीचे सिंक हो जाएगा. तो मैं बच्चों को दिखा तो सकती हूँ ना फ्लोट एंड सिंक. 2 ग्लासेस में पानी लेके एक में शुगर डाल दिया और एक में सैंड डाल दिया और शुगर डिसॉल्व करके दिखा दिया तो सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल. ऐसे बेसिक स्मॉल छोटी छोटी साइंस एक्टिविटीज विल बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टीचर्स इन द स्कूल in assembly once in a week. The next Wednesday talks about music and movement. So there will be songs played, teacher and children will dance together to ensure their psychomotor development. Thursdays we have pick and speak activity. जहाँ पे there will be a basket of objects kept. Children from the crowd will come and pick up that object and talk about it. अब अगर एक नर्सरी के बच्चे को मैं एक एप्पल दे दूँ तो that child will say apple. यही PP1 का बच्चा बोलेगा this is an apple, it is red in color. As we move forward, you will say this is an apple, it is red in color, it is a fruit, it is sweet and sour in taste, it has few seeds. I eat an apple every day. Communication skills by showing them objects in their environment so that they know how to speak. और ये सब जो कुछ भी हम कर रहे हैं कैन नॉट गो विदाउट यू पेरेंट्स. द लास्ट डे विच इज़ फ्राइडे वी हैव पेरेंट्स स्पीक इन द असेंबली. Teachers will be calling you to come and join us for parents speak. Please do not say no. Come for those 10 minutes. Tell our children any one story. If you are good at dancing, let the children dance with you. If you are good at singing, let the children sing with you. If you have some good fun games to play, please come and be a part of the child development. So every Friday, one parent for the parent speak activity. अब ये सब के लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड में चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर. द राइट काइंड ऑफ क्लासरूम्स, the right kind of play area, the right kind of building. So these are a few snapshots of the infrastructures of multiple schools of Narayana. And the next slide will also give you a glance at the activity room. Activity room plays a very important role क्योंकि जो इतनी सारी डेवलपमेंट है वो होती ही एक्टिविटीज़ से है. So we have specific activity room in Narayana where we take the children twice in a week and we make them do a lot of activities over there. अब इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाने के बाद उसको लर्निंग बनाने के लिए इट इज़ द टीचर्स टास्क. सो द नेक्स्ट स्लाइड विल टेल यू डिफरेंट वेरिएबल्स विच विल बी डिस्प्लेड इन द क्लासरूम. क्लासरूम को टीचर कैसे रेडी करेगी फॉर द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ माई लर्निंग एनवायरनमेंट. सो देर इज़ अ थीम बोर्ड, देर इज़ एन अटेंडेंस चार्ट. अटेंडेंस चार्ट वो चार्ट होता है जिसमें 2 सेक्शंस होते हैं, प्रेजेंट एंड एब्सेंट. और बाय डिफ़ॉल्ट हर बच्चे को एब्सेंट सेक्शन में डाल दिया जाता है एवरी डे इन द एंड. When I am as a child, I will enter, I will take out my name wala card and put it in present. So I will mark myself present, my importance of coming to the school, I will realize myself. Self-responsibility, self-realization, attendance chart. As we move forward, birthday chart. Celebration of birthdays, a very important event in the Narayana system. Every child needs to feel special for being on this planet. So birthday chart. My sincere request, please don't send chocolates on birthdays. Please don't send cakes on birthdays. हम ही बचपन से उनको चॉकलेट्स और केक्स खिलाते हैं और फिर हम ही एक टाइम के बाद बोलते हैं कि इतना शुगर नहीं खाना चाहिए. Please switch to chickies from chocolates. आप birthdays पे चिक्की भेजिए बट चॉकलेट नहीं भेजिए.
Homemade sweets भेजिए which are healthy for the child, but don't give chocolates. अगर हम आज से ये ट्रांसफ़र करते जाएंगे तो our children will have a healthy eating habit. So let's start developing that. Then we have a calendar chart which talks about the day, date and weather. The next talks about the story chart. The story which is going on in the curriculum will be displayed over there. Rhymes chart, again the rhymes displayed. Kids corner, the most important part of the class where the child's craft will be displayed. बच्चे जो करते हैं वो डिस्प्ले किया जाएगा in kids corner. So when you come for PTM, you can have a look at what your child is doing in the school. The next the slide talks about sight words. जैसे मैंने आपसे कहा कि आप अपने घर की चीज़ों को लेबल कीजिए, sight reading. So we also have a sight word chart in the school जिसको हम regularly बच्चों को read करवाते हैं. Next is ground rules. Look at the board, listen to the teacher, raise your hand if you want anything. These are ground rules. And the last is Bravo chart. We should always celebrate if we do something good. So Bravo chart calls for the celebration. Whenever I as a student do a good thing, my teacher will give me a smiley and a star over there. Not in the hand, not on the ID card. You need to collect your stars in your Bravo chart. This is the list of variables which we have for our children in this classrooms. Next we talk about parent partaking in the next slide. Nothing in Narayana goes without the parent. Parent is the most important integral part of the child development process. So we have a lot of activities for parents to come to the school and do it, some only for parents and some with the parents. As you can see, there is a parent making cold cooking things with the child. There is a parent doing art and craft with the children. There is a grandfather walking the ramp with the child, twinning activity. There are some more games only for parents. There will be days where you will be only called. There will be days where you and the student together will perform. So that's we have parent partaking. As we move forward, parent connect. Parent partaking takes us to parent connect, which is the most important part. Once in a month, there will be a PTM, जिसमें you have to come to the school, understand what the child is doing, teacher will interact with you, you will get the entire information from the school side. Along with this, in the Narayana system, we have an app called N-Connect. In that N-Connect app, we have a system called adoption calls. All the teachers will be given 15 children to adopt. And once in 15 days, the adopted teacher will call you and give you information about the child. These are recorded calls. ये ऐप से होते हैं. The teacher will give you all the information. अगर आपको कोई question पूछना है तो you can ask too. Your concerns will be addressed. Along with this, our app also has a section called N-Connect Concerns. So today my child was absent, my child forgot the water bottle, tiffin, writing portion is not done. Any concern which you have, you can write in the N-Connect app. The principal of the school will be able to access it and the vice principal of the department will communicate with you. So आपकी information can be given through N-Connect app also. That's we have called Parent Connect. My sincere request to all the parents, please answer the adoption calls. Those are very important. Once in 15 days, आपको पूरी information मिल जाएगी कि what the child is doing in school. Once in 15 days, one call, 1 minute or 2 minutes, not a big thing. Please answer the calls when teachers make you. In the next slide, we talks about scholastic and co-scholastic development of the child. We have the following activities being done in the school to ensure the scholastic and co-scholastic development of the child. So art and craft, dance, exercise, music, gross motor, fine motor, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले explain किया, sensorial and practical life skills. Next we talk about our digital world. We have two apps. One app I have told you, N-Connect. N-Connect में along with the adoption calls and all, you get your fee updates and admin related information also. The next app is N-Learn Kids, जिसमें soft copies of all the textbooks, videos which are related to each topic will be displayed over here. Giggles enrichment and thinker space activities. You can make the child do homework, click picture and
can post it over here. My child has completed the homework. There will be many small activities which will come in this. My child has forgotten the rhyme. You can show the video on this app, the same video which the teacher is showing in the class, so that the learning process is same. So we have Learn app for parents for easy access to the curriculum. As we move forward, we talk about student awards, events and celebration. Events and celebration का एक जिस तो मैंने आपको दे दिया, लॉर्ड गणेशा, दिवाली, ऐसे ही बहुत सारी और डिटेल्स हैं जो when we celebrate our events, we will tell the child कि Santa Claus क्रिसमस के दिन क्यों आता है, what is the story, Santa Claus कहाँ से आया, how is Santa Claus and Lord Jesus connected, हम क्रिसमस के दिन क्रिसमस ट्री क्यों डेकोरेट करते हैं, ट्री क्यों और ट्री क्यों. All these basic informations will be given to the child when we celebrate all our events, and you will see your children performing on stage by giving all these details to the children. They will be understanding the rituals and following it and not blindly following it. As we move forward, we have some general rules and regulations of the school. The school timings for pre-primary is from 8:30 to 12:30. Please make sure that the child enters the school at 8:25 and not 8:30. अगर हम day 1 से वो discipline form करेंगे तो ही हमारे बच्चे Indian standard time को follow नहीं करेंगे, which we don't want, right? If there is an absenteeism for 1 day or 2 days, please write it in the diary. If there is a long absenteeism, please send a letter to the principal for approval of the leave. Everything what you send in the bag, extra pair of clothes, water bottle, tiffin box, books, napkin, please label. Please write the child's name with OHP marker so that it cannot be washed also. Label everything, और label करते वक्त please make the child sit next to you and understand कि this is my belonging, I will take care of it, responsibility. So these are some basic rules for you to follow. As we move forward, इतना सब कुछ जो मैंने आपको बताया cannot go without teachers empowerment. जो सेंट्रल ऑफिस में बना है वो सोलापुर के टीचर्स तक कैसे आएगा. So we have teachers empowerment sessions every year twice. One which will happen now before you begin the session, and the other one will happen in semester 2. Semester 1, semester 2, 2 training sessions for all the teachers, so that central office में जो भी बना है वो properly teachers यहाँ पर execute कर सकें. So here's me, Leena Rajani, signing off from e-Kids curriculum and explanation. Any questions from the parent side later? So thank you so much. I request all the parents, सभी पेरेंट्स को विनती है, till the end of the program please stay. अगर कुछ लगता है मेरे बच्चे नर्सरी में PP1 में PP2 में हैं, सर एजुकेशन इज ए कंटिन्यू चेन प्रोसेस. नारायण इज ए सिस्टम फ्रॉम नर्सरी टू 12th 15 साल में. अगर आपके बच्चे e-Champs में e-Kids में क्या होने वाला था आप लोगों को समझ में आया, पूरा प्रोग्राम सुन लीजिए, आपको पता रहता है लेवल बाय लेवल आपका बच्चा किस तरीके से डेवलप होगा. और एक चीज़ है, आज बहुत सारे पेरेंट्स कुछ कारण से आया, स्कूल कब से चालू होने वाला है, स्कूल बिल्डिंग कब तैयार होने वाला है, नारायणा में फीस स्ट्रक्चर क्यों ज़्यादा है, कुछ पेरेंट्स का क्वेरी है, और टीचर्स किधर से रहेगा, किस तरीके से रहेगा, इसका पूरा आंसर्स आप लोगों को मिलेगा सर. सो आई रिक्वेस्ट टू स्टे टिल द एंड. हम लोग मूवी गए तो 3 घंटे टाइम पास करते हैं सर, ये बच्चों का भविष्य के लिए. ओके, प्लीज बी पेशेंट एंड गो थ्रू द एंटायर प्रोग्राम. थैंक यू. Thank you so much, Leena ma'am. Coming to the next part of the program, I would like to call upon Ms. Savita for e-Champ segment. She will be enlightening our parents about e-Champ segment. Children who will study between 1st to 5th standard are addressed to as Little Champs. Madam will explain the detailed plan for upcoming session. She will cover all the domain and general plan for the smooth conduction of the Little Champs department. Over to you, ma'am. Thank you, sir. Namaskar and good evening, everyone.
It's really nice seeing you all over here today. Yes, let's begin with e-Champs program now. E-Champs is nothing but our primary department. Primary segment here in Narayana is known as e-Champs. Yes, it is indeed very important for them to understand the technical things of primary education of each and every subject. About e-Champs, as Reena Madam has rightly enlightened us about cognitive development, social development, interpersonal development, emotional development, right? Same in e-Champs, we are going to focus on common teaching, common micro schedule, common examination and common analysis. In this I will focus majorly on common micro schedule. I can see 6 to 11 year students present here. So parents, I have a question to you all. How many of you all face the challenges कि मेरा बच्चा घर में आने के बाद जब मैं पूछती हूँ कि बेटा आज आपने स्कूल में क्या किया, मेरा बच्चा मुझे आंसर नहीं देता. How many of you all agree or face this challenge, right? So parents, this common micro schedule, this micro schedule booklet will help you understand, will help you overcome with this problem, right? And not only with this, it will also help you as a parent how to plan their revisions in the house, right? At your end, how to plan their revisions. Previously in our days, our parents, they used to prepare the proper timetable for us, right? They used to stick the timetable also. Today you have to study English and Maths and Marathi. They used to write the lesson, entire lesson. But this micro schedule will help you understand the detailed plan of each and every lessons of the subject. And how as a parent I am supposed to focus on topics, not the lessons, topics. Why? For their overall development, for their 360-degree holistic development. Next, what sets us apart? Social development. I'll ask parents. How many of you all believe or might have already faced, when I was in my school, I had a stage fear? How many of you all? स्टेज फियर था, पब्लिक स्पीकिंग में बोलने से डर लगता था, राइट? सो दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज will help them overcome. See, these are not only the activities which they are performing, they are even speaking about those activities. You can see the students are performing yogas. Students are enjoying the event Wildlife Conservation Day. So then and there itself, each and every student of the class, they come forward and they speak about the activity. Okay? Next, soft skill development. Nowadays, we all know soft skills plays a vital role, right? Many of us present over here are working. We know what is soft skills. Our presentation, our speaking skills, our public skills, our personality development. It matters a lot. Now, in order to overcome with this stage fear, here in e-Champs we give them many platforms. Platforms of spell bee, platforms of master orator competition, platforms of NROX. NROX is nothing but the radio jockey. Okay, Narayana quiz. So all these platforms in different months of the year we give them. Why? So that they learn and enrich the subject by going outside of the box. In our days, what we have witnessed, 4 walls of our classroom, 1 textbook, 2 textbook, right? 1 notebook we used to write, right? Teacher is teaching, we are writing, we are learning. Rote learning method, soft skill trainer rightly mentioned, learning, giving exam, learning, giving exam, right? That cannot work with our 21st century tech savvy student. We at
e-Champs cater to the needs of our 21st century students by giving these platforms. Now again Spell Bee. Spell Bee again, same subject, English, science, social science, mathematics, you name the subject, all those subjects are included in Spell Bee. But then and there they improve, they overcome with the vocabulary problem. They learn more and more vocabularies, right? See, we all know English is a global speaking language, right? Speaking English is important. But speaking smart English is very, very important. While we speak, we should smart sound. This is the need of 21st century student. This is the need. So with these platforms, we make sure that children, they inculcate these values and overcome with their errors. Next. Yes. Again, the very important development is language development program. And how do we simplify this language development program? Through listening, speaking, reading and writing. Okay, in our days we have been to library in our school. We have taken books, we read, we returned it back to the librarian, correct? But here in e-Champs, after reading a book of 1 or 2 pages, we will ask a child to write about that book, just in 1 page, which is called reflection log sheet. The book name, author name, right? What the summary of the book, what the child understood about the 1 page, so that the child overcomes. Then and there it improves their memory, right? Madam mentioned about the cognitive development. Cognitive development is nothing about their memory, their attention, right? So this listening, when we listen, we understand, right? So these kind of activities, listening, speaking, reading, writing, we have various type of audio-visual modules. Not only the books. To grab their attention, we have various types of audio-visual modules to help them understand these skills. Next. STEAM activity. STEAM is nothing but science, technology, engineering, arts and mathematics. We all know NEP 2020 program, which is nothing but integration of subjects. Integration of English into science, science into maths, integration of arts into these subjects, right? So this STEAM activity, it's a group activity, sometimes the individual activity, basically the hands-on learning experience. Students, they form a group, they prepare a working model. Example, in social science, they have given to prepare a model of a dam. Students of 5 to 6 groups, they will prepare a model of a dam, which is a working model of a dam, right? Then they will explain in science about the kinetic and potential energy about the dam. Then in English, they will write their observation and experience while they were making this project. So not only English, science and maths or social science, other subjects like Hindi and Marathi is also included in STEAM activity, so that we take them outside of the box to help them understand about not only the concepts of those subjects, about the technicality about the subjects as well. Okay, next. Math enhancement program. Now I will ask you one multiplication question. Very easy question I will ask you. Okay, I'm very sure in our school days we have learned multiplication. What is 19 eighths? Raise your hand. 19 eighths. It is taking time, right? 19 eighths. Still taking time. Yes, beta. Very good. Parents have not received any answer from parents' end, right? Why? Because we followed in our days drill method. We used to drill 2 ones are 2, 2 twos are 3, 2 twos are 4. Our parents used to ask us to drill 10 times, sometimes 20 times also as a punishment, right? We followed the drill method. That is also right method, not the wrong method. But in order to meet these 21st century students, and let us not,
them also to face the same problem the way I've witnessed just now. We teach them mathematical operation, which is addition, subtraction, multiplication and division, in a different way, in a unique way. By teaching them tricky tables, by teaching them the tricks of those operations. Drill method sometimes may or may not work, but these tricks, if you know, it will surely work, right? So the tricks of those operations are taught in the classroom by the mathematical experts, our teachers, through Vedic mathematics, through abacus. Okay, next. Brain booster, again the same thing. Library, I've given you one example. The child will write what he or she has understood about that particular book or a page. Again, general knowledge. Okay, general knowledge, a detailed explanation of each and every question is given in this book. Our children, they are sitting from morning to evening, right? 8 to 3. Especially after the long break, after the lunch break, it is very difficult for us to grab their attention. Very difficult. Because they had the heavy, yummy lunch given by you all. Now they are feeling sleepy. So what to be done? So these kind of platforms, brain booster, math enhancement program, are the ways to grab their attention and again to enhance their subject skills. Again the same thing. Why? For helping them to cater to the needs of higher school education. Next. No back day. Very, 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 students on third Saturday, they enjoy this no back day. Again, no back day doesn't mean they'll not come with the bag. They have to come with their bags. Yes. But with their one tiffin, with any one book or two book with the subject teacher will ask, and the required materials. Why? Because on this day, they are going to perform the hands-on experience in the classroom. I gave you example about the working project of a dam. Germination of seeds. It takes time, right? So each and every project, they'll be focusing in this no back day. Again, no back day, not all on Saturdays, only on third Saturday, or as and when the teacher will ask. Okay, next. Our integration of multiple resources, Hindi, social studies, computer, dictionary, EVS for grade 1 and 2, science for grade 3 to 5, and mathematics. These are the subjects which we have included in e-Champs. Next, in-house study material. e-Champs diary, Engage. Engage is nothing but our grammar book. English, textbook, sadhana workbook. Third is Engage, a separate book for them to understand grammar. See, in our days, we have learned grammar. Their rules we have learned, right? But sometimes we have done mistake because we were not knowing the exceptions of those rules. So learning the exceptions of those rules are very, very, very important. That's why if you have seen, we know it already in English or any language, scoring 100% marks is not possible. आपने कभी सुना है किसी बच्चे को इंग्लिश में 100 out of 100 लिया है? It's not possible, right? Because we don't know the exceptions of those rules. Because in English, there is one rule, but for that one rule, there may be 10 to 100 different types of exceptions as well. So you're at e-Champs with the help of this Engage book. Teacher is shaping, is helping them to understand those exceptions. Okay. Next is soft skill booklet, N Fundamentals. N Fundamentals is nothing but our bridge course book. Now students of class 2, I'm a new teacher. For students also, I'm a new teacher, right? For me, they are new students. So in order to understand
when and where as a teacher I need to work. 10 days of the beginning of this session, we work on N fundamental, the revision of the previous class to know about the child. Okay, sadhana workbook. Why at Narayana we have designed this sadhana workbook? Bag management. अक्सर हमने प्राइमरी स्कूल में पेरेंट्स को ये बोलते देखा है कि मेरे बच्चे के वजन से ज़्यादा उसका बैग का वजन है, राइट? द बैग इज टू हैवी, प्लीज डू समथिंग. सो इन ऑर्डर टू ओवरकम विद दिस प्रॉब्लम and in order to save time also, we have minimized the usage of notebook, and sadhana workbook is nothing but the pre-printed form of questions, and there they are supposed to write the answers again with the additional questions. As you all know, here at e-Techno we are focusing and our curriculum is based on Olympiad. Okay, brain booster I explained to you already to develop their overall development about the subject of social science, GK and English. Next is micro schedule, I explained you already. Next, best in class infrastructure. Okay, even while the child is writing, reading or doing the activity, even if the child see left or right also, the child is learning. How? Their teachers, their subject teachers, they prepare the variable based on the subjects, based on what they are teaching in the particular day or a week. In that, the students might be also involved. They may be asked to prepare some charts, some informations. So whenever you receive any such homework, so please help your ward. Okay? Next. Teacher training and continuous improvement. Okay, so twice in a year, our resource person, our R&D heads, our team of dedicated researchers, they come and they train our teachers. Okay, our expert workshops are designed for understanding the child's psychology, how to understand this micro schedule, how to understand these textbooks, how to understand all the books. Is that depth the training is given to our teachers. Next, our methodology, our methods. Micro schedule. As a teacher, after referring to the micro schedule, I'll prepare lesson plan. Because by now, I know my audience, I know my students. So based on my students, I'll prepare the lesson plan. Lesson plan is nothing but a detailed study about that particular lesson or a topic. I know these students are there in my classroom who are very hyperactive, who are disruptive, yet again very brilliant, right? Who are very disruptive, बहुत मस्तीखोर है, बहुत naughty है. तो मुझे क्या करना चाहिए as a teacher? I should engage them through activity, right? If I'm only teaching, standing and teaching, definitely they are naughty students, they are not going to listen to me. So my lesson plan is based on my students. As per their needs, I'm going to design. Okay? Next. Competitive exams, very, very important. NTOP. NTOP is nothing but Narayana Targeted Olympiad Program. As I mentioned earlier, our program, our curriculum is based on Olympiad, right? So class 4 and 5, we have introduced this concept to them. In this, we have included 3 subjects: science, maths and English. Science for 10 marks, English for 10 marks, mathematics for 20 marks. And we make sure that students, we always motivate them to score 100 out of 100. Sometimes parents may think, why are they pressuring our child? It's not about pressuring your board. No, it's not about pressuring my student. It's about helping them understand 100%. It's very, very important for them to understand the concepts and technical based education, technical based knowledge about that particular subject in primary sector, primary segment. It's very, very important. So these are multiple based questions, MCQs. 1 question, 4 options. Again,
from the lesson, from the textbook itself, from the index itself, but completely technical based. Question not from the textbook, outside of the box, wherein they're logically thinking about those topics. Logically thinking. The answer is very simple. Answer is there in front of them, but they have to find the logics. Okay? So in that way, our teachers are training our students and always motivating them to score 40 out of 40, 100% marks. Again, for this, in common analysis, there was one slide before, this end top, they're not competing inside the four walls of their classroom. Like there are 40 students in the classroom and I'm competing with those 40 students? No. They're competing pan-India. Pan-India students. And let me tell you, once the analysis is ready, once the teacher receives the analysis, those analyses are explained to the students and detailed explanation is given to them where you are standing. Pan-India branches, state branches, district branches. Where is my rank? Again, the remedial class is also taken. It's not like that I'm a student of class 5. Out of 40, I have scored 35. So 5 questions went wrong? Fine, 5 questions went wrong. After the analysis is received, the subject teachers, they explain each and every question to the students individually. They explain to the students where you went wrong. They fill that knowledge gap. Again the same, 100% understanding about the concepts and applications of the subject. Okay, next. Synapse. Synapse, we have tied up with the synapse. Olympiad exams. Often we have seen parents, they encourage their child to participate in mathematics and science. But as a teacher, I'll encourage you, let them participate in whatever subjects our synapse is providing. Social science, English, ICT. Let them participate in other subjects also. Let them understand about this subject, where am I standing? Where is my knowledge gap and how I need to fulfill. Again, the Olympiad exams is just like a revision paper for them. It's a revision paper for them. For their continuous enrichment, it is very important that we enroll our child in Synapse Olympiad exams. Very, very important. And once again, I'm personally requesting you all to enroll for all whichever subjects Synapse platform is providing to us. Please, please enroll them. Let them understand. Okay, next. Our digital world, N-Connect, N-Learn app, N-Learn Kids app. Again, the same thing as Leena madam mentioned, interactive sessions. During the exam, sometimes as a parent, we face a difficulty about how as a parent, I should prepare my board, right? So in N-Learn, mock paper test will be generated, wherein as a parent, you will understand what is the blueprint of that subject, how the questions are framed. Example, fill-ups is for 5 marks, objectives is for, match the following is for 2 marks, descriptive, question answers, brief is for 10 marks. So where as a parent, I need to put weightage, it will help you all to understand. Again, the question exam fear, the child will also overcome because child need to appear for that test. The child will also understand what kind of paper pattern is there during the exam. Okay, then and there the confidence will be boosted. Then and there the child will also understand how much more practice I need to be done. Okay, next. N-Connect. So whatever today as a teacher in the classroom I have taught in my 8 lectures, those things, therefore in English I have taught page number 10. In mathematics I have taught page number 15. Those details you will be receiving. Whatever I have taught today, you will be getting in N-Connect. Again, what is the homework given to your child? You will be getting in N-Connect as well as in the e-Champs diary. Both the ways. Okay.
We have a concept of adoption calling, wherein twice a month you will be receiving from the class teacher or the adopted teacher. I always encourage parents to please receive that call. Very soon our dedicated team will be sharing with you all the adoption calling number. Please save that number, because sometimes that number is reflected as a spam number. Many a times in our mobile there is an automatic setting to block the spam numbers, right? So here the teacher is trying to call you, teacher is trying to reach you, but because of those settings, we are unable to connect with each other. So please save that number, first thing. Second, receive that call. Twice in a month you are getting, first 15 days, last 15 days. So first 15 days, in the first week of that month, the class teacher or the adopted teacher will explain you the importance of those 15 days. If there is any event, if there is any celebration, so what are the practice required from the students' end, and how you are required to guide at home, or any homework, or any feedback about your ward, it will be given. Okay, so please, at the same time, we also encourage parents to give your feedback about your observation, how your child is behaving at home. Okay, say for in mathematics, there are 5 problems. 3 is solved in a school, 2 is given as homework. Sometimes the child may do, sometimes child is unable to do, or sometimes the child is bored. So whatever is your observation, you please reflect it, talk it back to the class teacher or the adopted teacher. Help them know about your child. Help them know more about your child. Okay? Next, academics and beyond. Motivation plays a vital role. Who all agree with me that motivation really plays a vital role? Sometimes at home also we say, na, okay, you do this, you complete this activity, or you score 90% and above, I will give you this gift, right? That is motivation. We also call it bribe, right? So here we are motivating them. And how are we motivating them? With the different clubs. Each and every month there will be different types of clubs, and students, they will be speaking about those clubs, those activities. It is not only Raksha Bandhan activity or Rakhi making activity, it is not only Janmashtami, it is not only Eid. The students, they speak, they talk about the significance of that event, whether it's events or celebration, whether it's about their subjects, be it whatsoever, they speak, they talk. Okay? Next. Co-scholastic programs and their learning outcomes. So whatever is the theme of the month, example, if I have in the month of June, there is a club, nurture the nature. So the child understand what kind of values the child has learned, that we have to save trees, we have to plant more trees for our good environment, for a better future, right? So these kind of values our teachers, they inculcate. Art and craft. As madam mentioned, art is not only restricted to the drawing, right? Or making any mod. Right? Okay? Club activity. Exploration of their interest. Some students, they like dance. Some like singing. Some like different kind of activities. So they enjoy each kind of activities which we provide. Okay? Nutrition. Once in a month, they'll be getting one topic. Okay, for the short break and long break. Whether it's protein or iron-rich food, or any vegetable topic will be given, or a fruit topic will be given. You please help them with the material. At school, they need to come along with that material, and they need to present the plating decoration. And not only it is like a fireless cooking, no. They need to speak about those decoration, those plating. If it is protein-rich food, so what kind of food I have included? What kind of protein percentage is there? Why protein is important for our body? So each and everything the students, they speak in this activity. Events and celebrations. Why events and celebrations is important? For their social development, for their cognitive development, for their interpersonal development. Yes, their competitions, for giving them the team spirit. We have NPL, Narayana Premier League.
in the month of November or December. So the various branches, different branches, they come together and they play. Okay, next. Now for the motivation, these are the badges which we provide on a rotation basis. We have for super speller, rocket reader, young Shakespeare who is able to write brilliantly, the creative writing if I'm saying, star student, smart writer. So whichever activity with the subjects they are doing, those are being motivated. Those are being recognized. Okay, next. Events and celebrations, you all can witness how the students are performing. Next. With e-Child's program, your child gets the best communication skills. I told you the different kinds of platforms we give them, like Spell Bee, Master Orator, Narayana Quiz. We give them Brain Booster. Different types of platforms we give for them to improve their communication skills, social skills, emotional skills, their conceptual skills, means understanding and acquiring the different knowledges. Their academic support and guidance to teachers and parents is given, and for the safe and positive learning. So parents, it is very, very important as a parent, as a teacher, that we are continuously there behind our child, behind our what? Behind our students. Because it is very important for us, for parent and teacher, to develop and maintain their strong foundation. I told you already why it is important, for helping them to tackle for the higher education. Okay? As RMR sir rightly said about our slogan, Sanskrit slogan, Shramaya Bhajate, hard work leads to excellence. So with this spirit, we need to help each other positively. It is very, very important for our teacher and for our parents also to interact with each other positively so as to understand and work upon our children. Okay? Thank you so much. So this was all about e-Champs program. Any questions from your end? Okay, in the end we'll focus. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for letting us know about e-Champs. इंसान अपना भविष्य नहीं बनाता, इंसान अपनी आदतें बनाता है, उसकी आदतें उसका भविष्य बनाती हैं. If we include all these wonderful activities in our kids' life, don't you believe that nobody can stop them to become the indomitable personality in future? Now, without any further ado, we would like to invite Mr. Naga Sai to come forward to guide us about the high school segment. Sri Gurubhyo Namaha. Samaka Namaskaram. So, good evening, the respected audience, parents, and my dear students, along with the dignitaries from the dais. Warm welcome to this session. Thank you very much for giving this opportunity to share you few things about Narayana e-Techno curriculum. Thank you. I welcome you all once again to this session with some good round of applause. I want everyone to be involved. And there is no Josh, please. I want all of you to join your hands, please. You are all sleeping, it seems. And now, before that, we are going into the e-Techno curriculum. Let's play a small game. Are you ready? As students are much interested, right? Are you ready? Let's do what I say. I request all of the audience here to do what I say. Please raise your right hand. I request everyone, please raise your right hand. Right fist. Yes. I request everyone to keep your right hand on your head, on your cheek. See where you kept you are keeping on your chin, not on the cheek. This is the cheek. Right now, how many of you failed? So I said in the beginning, follow what I say, but never said what I do.
Do you understand? I said in the beginning, you follow what I say, not what I do. But most of you followed not my words, only my action. Remember that this is not exception even for the children. Children will also do what we do, not what we say. So beta, don't watch mobile after 9 o'clock. But 11:30 the father will be watching the mobile. Okay, I think now let's go into that our e-Techno program. So this is a blend of CBSE curriculum along with our Narayana e-Techno material. So this is the brainchild of our Honorable Chairman Sir, Dr. Pongoleti Narayana Garu. So in this program, if we observe, a perfect blend is there where the child is trained for 5 plus 2 academic years. 6, 7, 8, 9, 10 and plus 1 plus 2. These 7 years, a foundation course is offered to the students, where the student is perfectly nurtured to get best placement in the IITs or in the NEET. Further, the program is designed and it is perfectly blended between the CBSE as well as e-Techno program. Next. So what is the significance of this program? Coming to this program, if you see, in the beginning itself, Madam told that there are some 4 pillars on which the Narayana group is standing. The first pillar is micro schedule, a common one. Wherever you go in Narayana, we follow the same micro schedule. The second one is common syllabus, common micro schedule, common syllabus, and then common examination, same question paper everywhere, whether the student is writing in the Delhi, Vijayawada or in Hyderabad or in Solapur, same question paper, no variation, no distinguish between the state to state or center to center. The fourth one is common analysis. The analysis after the examination is also on the common platform. These are the 4 pillars of Narayana where we are standing our e-Techno program. So to make the student to understand the concepts, first of all, we must remember understanding the concept is very, very important. How to make the student understand the concept? For that, again, the Narayana sir's brainchild is there, CDF. The formula is CDF. Concept, definition, formula. A small booklet will be given to all the students of 6th to 10th standard where mathematics, physics, chemistry, bio, as well as social studies. A separate booklet will be given for BES, and the CDF will have mainly mathematics, physics, chemistry, biological sciences. All the concepts are given. Every week, one examination will be conducted on 10 points, 10 to 12 points in each subject, all the 4 subjects, mathematics, physics, chemistry, bio. 10 to 12 points will be given on weekly basis, and on these 10-12 points, one examination will be conducted which we call as CDF examination. In this CDF examination, how many questions will be there? There will be 40 questions. 10 questions from mathematics, 10 questions from physics, 10 from the chemistry and 10 from the bio. 10 to 12 points, and examination is also conducted on 10 questions only. Remember that here we want all the children to understand the concept. These 10 points are the concepts. Each and every student must know the concepts. So for that, again remember that we focus on centum in the CDF, 40 out of 40. Because we don't want any student missing any concept. We want all the concepts must be learned by the student. Right. I hope that the importance of the CDF is understanding the concepts by the student. Right. Why we are choosing the Narayana group? Thank you very much for choosing our group. You know, right, I have one question I would like to ask you. When I am coming to the Solapur, I heard about Solapur. Something is special in Solapur. Can anyone say what is Solapur is known for? Solapur is known for? Huh? Okay.
Solapur is known for its best quality. Best quality? Yes, right. And also Narayana is known for ranks, IIT ranks. Solapur is known for the bed sheets, whereas the Narayana is known for ranks. Wherever you go, our Narayana students, we have shown one slide. Out of the total 300 out of 300, 6 students are from Narayana. The strong foundation 5 plus 10, 5 plus 2 gives the best to the students. Thereby they are rocking in the national level examinations. Followed by the JEE mains model examination. Once in a fortnight, we will be conducting JEE mains examination to all the students, 6th to 10th standard. In this JEE mains examination, there will be 5 subjects. Maths track A, which is our volumes. Maths track B, the NCERT books. Physics, chemistry and biological sciences. These are the 5 subjects which we are conducting examination once in a fortnight for 300 marks in the model of the JEE mains. Each subject will carry 15 questions. Each question will carry 4 marks. Subject wise 60 marks, 5 subjects, 300 marks. Each question is having 4 multiple choice answers. So the student has to pick up one and he has to bubble the OMR sheet. Right. After this, the OMRs are scanned. Analysis will come. That analysis will be discussed with the students. What is this analysis? Why analysis is very important? See, analysis, after doing something, what we did, how we did, where we failed, where we gained is very important. Here, student-wise analysis will come. We discuss with the students analysis where the student failed, where they lost the marks. And after that, along with this analysis, we will give the errors list to the student. This is a very important one, is errors list to the student. What is this errors list? This errors list contains what the mistake the student did in the examination. Usually in schools, what happens after once the examination is completed, they'll forget about the question paper. But here, what we do is that whatever the mistakes the student did, we give in the form of a small printout that is pasted in a notebook where the student need to solve all the wrongly did questions. Whatever the wrongly did questions are there by the student, that list is given and the student need to write or solve all those again in the errors list book, and then he has to get the subject teacher's signature. Thereby what happens, whatever the concept he is learning during the examination time, he failed. But if we leave it, he will forget. But again, we are giving a practice further to understand where the mistake is done, and that is given. So in the JEE mains, ranking will be given subject wise as well as overall. This ranking is all India wise. Suppose in class 8, some 50,000 students are there. So what is my position among the 50,000? What rank? What is my position? The student can understand and the teacher also can understand where my students are performing. How my students are performing. What are the areas our students need to develop. And also question wise analysis will be given. The toughness of the question paper, the toughness of the questions also we can understand. Suppose 80% of the students are unable to answer the question. Therefore we can understand the level of the question is much above. Only few students did not answer. Those are the students did not practice well. Simply we can understand by seeing the analysis how best the student is preparing for the examination. How he is working at home for the examination. That is very important. Analysis is very important. The principal, academic team as well as the coordinator, whenever we visit, the previous analysis will be discussed with the children. Thereby we create awareness among the students to understand where they are missing. Right? After this JEE mains, we conduct another examination for the student in the model of JEE Advance. The JEE Advance will be conducted for only 3 subjects. Mathematics, physics, chemistry. All the 3 are the volumes, not the NCERT books.
Whatever the Narayana material we are giving, from that only we will be giving. Okay, these three are conducted for 222, 222 marks. Each subject carries 74 marks. Okay, here there are 4 different types of questions. The students will be checked in 4 different types of questions. Single correct answers, multiple correct answers. One question is given. Multiple correct answer means option A is correct, option B is correct, option C is also correct. The student has to bubble all the 3. Then only that will become the correct answer. Or otherwise A, C, D is correct. The student need to bubble A, C, D. Or all the ABCD is correct. He need to bubble all the ABCD. So that is multiple correct answers as well as matrices matching. He need to match the followings. Like that, comprehension passage will be given, questions will be asked. They need to answer. In this examination, JEE Advanced Model, negative marking will be there. The student must be very, very careful in giving the answers, because negative marking, whatever I scored already, if I give wrong answers, I may lose. So unnecessary attempting, just throwing the stone, is avoided by negative. So these are the examinations that are periodically conducted in the Narayana group. Along with that, NCERT is never neglected. PT1, PT2, PT3, PT4 examinations as well are conducted according to the schedule given in the MCS. Whatever we are giving in the micro schedule, accordingly we will be conducting the periodical test to the children. Right. In the JEE, to measure the depth of learning of the students, for making it more attractive to the students, we are giving level promotions to the students. We are giving level promotions to the students. What is this level promotion? We discussed now, after one JEE mains examination, JEE advanced examination is conducted. On an aggregate of 80%, JEE mains and JEE advanced, if the student is scoring more than 80%, the student is promoted to next level of examination, which we call as E3 level of examination. All the students in the beginning will be in E1 level of examination. Now, after completing 2 tests, those students who scored more than 80% of the marks on an aggregate of JEE mains and JEE advanced are promoted to E3 level. What is the difference between the E1 level and E3 level? The question paper of E1 level is different, E3 level is different. The depth of the questions in the E3 level is much difficult. The difficulty level of the question paper is increasing. Vice versa, the students who are appearing for the E3 level of examination, after completing one JEE mains and one JEE advanced examination, on an aggregate of 80% if they are scoring, they are promoted to the next level of the examination, which we call as E5 level of examination. Here the toughness of the paper we can understand. This is the toughest part of the question paper. And questions will come from reference books also. Suppose the light concept is going on. Not only from the volume and the textbook we are giving, on the concept of the light, questions will be asked. The student need to prepare well from the reference books also. For such students, the teacher will teach separately. After the class hours, depending on the situation, the teacher will be teaching the E5 level of students separately. All these students will be sitting in the same classroom. The E1 level students will be motivated. Okay, all my friends are going to E3 level, E5 level. So I need to push up to E3 level and I need to go to E5 level. At the end of the academic year, Narayana sir's vision is that there must be no student in E1 level. Every student must be promoted to E3 level. That concept is from the Narayana sir as well. That gives an inspiration to all of us. We will try to promote all the students from E1 level to E3 level. Here we request all the parents, remember that examinations are very important in Narayana group. Please see that the students are regular to the examination, regular to the school and never absent. So thereby the level promotions can get, and also
you know well, Narayana Group is having different sets of schools. We have e-Techno schools. Right now we are opening in the Solapur. We have Olympiad schools. We have CO schools. The curriculum is different and the number of periods allotted for subjects MPC are more when compared to the e-Techno. So where the depth of the subject is much higher, the right preparation for the IIT will be there. So the student who is performing well will be promoted. So hopefully we think that in the Solapur shortly we also can have Olympiad branch in the same. Thereby our students will get the best one. Right? Before going to the other things, I would like to bring into your notice the role of the mother in the child's growth. In the personality of the student, the mother plays a major role, vital role I can say. Because most of the time the student is in the school or with the mother, not with the father, remember. Most of the time father is not available for the children. Mother is only teaching the student at home. Right? I'll tell you a small story where we can understand what is the role of the mother. One time in a school, you know well, we all faced this. The teacher will ask a question. What do you want to become after you complete your education? But that's a common question from the teachers, right? One says that engineer, doctor, teacher, pilot, what not, everything they are telling. The turn of one student came. The teacher asked, "Beta, what do you want to become?" "Sir, I want to become a chariot." Everyone laughed. "I want to become a chariot. You want to run the horse cart." So everyone laughed it, including the teacher. So the rest of the things gone. The students are going home after the bell. One of the neighboring student of this fellow student went home and immediately went to the aunt. Aunt, do you know what happened today in the school? We are very much interested to tell the others about the things of the others to the parents, right? So what happened today? Teacher asked, "What do you want to become?" Your son told that you want to become a chariot. Okay, beta, let it be. By the time this child came home, then the mother asked her the same question. "Beta, what do you want to become?" "Mom, you know I want to become a chariot." Again, the student gave the same answer. Then immediately she took him into the prayer room where she showed the sun god. "Beta, you must become like the sun god. You must give light to the entire world. You must run a chariot which gives light to the entire world." You know who is that student? That student is none other than Vivekananda. That is the character of the mother. That is the role of the mother in the nurturing of the student, shaping the student. So remember, dear mothers, never give up. It is in your hands. Please give the shape personality. For personality, I'll tell you one more example. For developing the personality. You know, Shivaji Maharaj. What is his character? He see mother in all the women. Who is behind him? His mother Jijabai. She only taught him that. She only gave him that character. That personality came from his mother, right or not? So mother is the one which gives the shape. Right? Am I right or not? So I request every mother, please keep that in mind. Every time find out the mistakes done by the student, correct in the right way. And also I request one more thing also to the mothers, that usually sometimes what happens, when you people are unable to manage the students, manage the children, you will say, "Let father come, I will tell about you." Right now? Am I right? You know what is the meaning of that? Let your father come, I will tell about you. You are directly telling that I am helpless, I can do nothing with you, let your father come. What is that? That is what we are giving. Right now? So later on, "Okay mommy, I know well, you can do nothing." So I request mothers, don't use this word again. Okay.
So whatever you want, you tell the counseling. Counseling is the best part. Please counsel him, right? Okay, right. Coming to the teacher's part here, the mother gives the birth, whereas the teacher gives the wisdom. Mother gives the birth, whereas the teacher gives the wisdom. So dear teachers, remember that our responsibility is much greater in nurturing, in shaping the future India. Future India is on our shoulders. So please give the best concept to the children. Here the teachers are regularly given training. Weekly workshops also will be conducted for the high school teachers, and thereby they can give their best to the students. So thank you all. Thank you very much. Have a wonderful time. Thank you so much, sir, for bringing such a huge energy to the stage. Now, as we have understood about the Narayana system, we would like to know if there are any queries from the parents and guardians, as we request our respected TJM sir to please, have a discussion with the parents. As it is getting late, I am hurrying myself. मैं खुद लेके बात करने चाह रहा हूँ. अभी जो doubts है parents में, we are going to start the school on 3rd June. जून 3 तारीख से हम लोग स्कूल चालू करने वाला है. Okay, with all the proper infrastructure. Landlords इधर ही बैठा है. जो दिन स्कूल में बच्चे पैर रखेंगे, वो दिन कोई भी काम नहीं चलते जो जिधर बच्चे बैठेंगे. और एक चीज़ आप लोगों को क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ. We are going to occupy only ground plus first floor for the first academic year, where rest all the work we are trying to complete. इसलिए जब भी आप लोग जाते हैं, आपको दिखता है काम चल रहा. हम लोगों को जितना चाहिए उतना काम हो चुका है. But due to the climatic changes, temperature changes and all those things, I am not planning to run the school in the month of April. June 3 तारीख से स्कूल चालू होगा. If there is any change, अगर गवर्नमेंट GR में अगर धूप काल की वजह से अगर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ इंटीमेशन है ये 21 तारीख से 26 तारीख तक अगर कोई इधर पेरेंट संभाजी नगर का दौरान है, प्लीज हमारा ब्रांच है उधर विजिट करिए. उधर 700 से 800 टीचर्स एक ही प्रीमिसेस में कमल नारायण बजाज हॉस्पिटल के बगल में है, जो नारायणा e-Techno स्कूल संभाजी नगर, वो कैंपस में दिखेगा. इसका मुख्य कारण क्या है? आने वाला देखिए, जो बच्चों के सामने मैं जो बोल रहा हूँ वो ही सही है, बट जब रिसर्च पर्सन, R&D हेड्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, जो पब्लिशर्स, जो बुक्स प्रोवाइड करने वाले सभी लोगों के सामने, इतना सारे टीचर्स को सामने, हर का वेवलेंथ के हिसाब से टीच करना इतना आसान नहीं है. इसका ट्रेनिंग सेशन 5 दिन के लिए, आने वाला 5 महीने जो पढ़ाना है टीचर, उसका ट्रेनिंग सेशन चलता है. एंड टीचर्स रिक्रूटमेंट इज ए मिक्सचर. अभी जैसा अलग अलग जगह से आया हुआ टीचर्स भी है, सोलापुर से भी टीचर्स है. और एक चीज़, मुझे जब मेरा टीम से इंटरेक्ट किया, जो टीचर्स किधर से रहेगा ये मेरा जिम्मेदारी है. सर मैडम आप लोग निश्चिंत रहिए. आप लोगों को किधर भी कोई भी तरीका से दिक्कत हो रहा, आपको बच्चों को दिक्कत हो रहा, आपका अनकनेक्ट ऐप है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका एडमिशन नंबर आया हुआ है, रिजर्वेशन नंबर, आपको क्रेडेंशियल्स भेजेगा हमारा टीम, ऑलरेडी भेजा हुआ है. अगर मिस हुआ तो कल फिर से भेजेगा. इमीडिएटली डाउनलोड एंड कनेक्ट एंड लर्न ऐप. अभी तक कितना लोग एंड कनेक्ट और एंड लर्न ऐप डाउनलोड किए इधर? गुड नंबर. ईच एंड एवरी पेरेंट डाउनलोड. क्योंकि अभी आप लोगों को लगता होगा अप्रैल में स्कूल चालू हो जाता तो अच्छा रहते थे ये वो बोल के. आपके पास एंड लर्न ऐप है, इसमें सारे मॉड्यूल्स है, सारे वीडियोस है, मॉक टेस्ट है, होमवर्क है, हर चीज़ है. आपको जो भी डाउट्स है, मैं इनिशिएशन लेके आप लोगों को मंडे से अडॉप्शन कॉलिंग टीचर्स कौन है आज के दिन दे दूंगा फिलहाल के लिए, और इसको मैपिंग भी करवा दूंगा. आपको जो भी तरीके से जो भी डाउट्स है ये टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं.
एंड टीचर सर 15 दिन में आप लोगों को कॉल करने वाला है। और कुछ पेरेंट्स जो इंक्वायरीज किया, क्योंकि आज के दिन जो माध्यम है मेरे लिए आप ही लोग हैं पेरेंट्स। मैं पहले ही बताया था आपका जिम्मेदारी क्या है, आप लोग इतना मेहनत कर रहा, इतना ये कर रहा, स्ट्रगल कर रहा, किस चीज़ के लिए, बच्चों का अच्छा भविष्य बनने के लिए, ये जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ 100%। आप कभी भी पूछ सकते हैं। आज से जो प्रॉपर नारायणा सिस्टम क्या है, जो जितना लोग इधर सुना हुआ है, ये लोग एटलीस्ट एक एक पेरेंट 5 लोगों को मोटिवेट करने की जिम्मेदारी आप लोग लेना है। खाली जो सच है वही बताना, हवा में कुछ बात करने की जरूरत नहीं। और एक चीज, कुछ पेरेंट्स को लग रहा जो फीस स्ट्रक्चर है, आज के दिन सर नारायण से ज्यादा फीस स्ट्रक्चर लेने वाला है, कम फीस स्ट्रक्चर लेने वाला है, ठीक है, बट हम लोग मॉडरेट फीस स्ट्रक्चर शहर के हिसाब से रखा हुआ है। आज के दिन यही फीस स्ट्रक्चर पुणे में गए तो इससे 2 गुना है, बॉम्बे गए तो 3 गुना है। जो पढ़ाई जो चलने वाला है, माइक्रो शेड्यूल, कॉमन एग्जामिनेशन, कॉमन एनालिसिस, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब इधर कहने का मतलब क्या है, आज के दिन आप अलग अलग तरीका से खर्चा कर रहा था। एक बात, आप कोई भी ओलंपियाड एग्जाम देखिए, नर्सरी LKG UKG में हम लोग बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स, फिजिकल डेवलपमेंट, IQ डेवलपमेंट के ऊपर कोशिश कर रहा विद एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज एंड इवेंट। फर्स्ट स्टैंडर्ड से अबैकस, 4th स्टैंडर्ड से नारायणा टारगेट ओलंपियाड प्रोग्राम, 6th स्टैंडर्ड से कभी सुना क्या सर आप लोग ने, मैथ 2 ट्रैक होगा, फिजिक्स अलग होगा, केमिस्ट्री अलग होगा, बायोलॉजिकल साइंस अलग होगा, किधर भी नहीं। क्योंकि ये सारे चीजें जो हम लोग पढ़ा रहा, इट इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट सर। जो हम लोग पढ़ा रहा, हर चीज बच्चों को हर जगह पे जरूरत है। और जो आज के दिन आप लोग देख रहा, ये एक्टिविटी के लिए पैसा, वो एक्टिविटी के लिए पैसा, कोई भी नहीं रहेगा सर। ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द फी ओनली। अगर आपका बच्चे एनुअल डे में पार्टिसिपेट किया, जो कॉस्ट्यूम का रहेगा, जो एक्सकर्शन रहेगा, दैट इज रिक्रिएशन फील्ड ट्रिप, इसके लिए चार्जेस रहेगा। जो रेगुलर एजुकेशनल फील्ड ट्रिप्स रहेगा, इसका कोई चार्जेस नहीं रहेगा। देखिए, ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं। अगर जो बच्चों को लगता है हम लोग ज़्यादा इनपुट देना है, और जो हम लोगों को लगता है इसको थोड़ा और बहुत मेहनत करवाना है, हम लोग पेरेंट्स को खुद रिक्वेस्ट करेगा आफ्टर वर्किंग आवर्स। ये अगस्त महीने से चालू होकर एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर तक चलेगा। दैट वी कॉल इट एज रेमेडियल क्लासेस, वेयर खुद ये सब्जेक्ट टीचर, जो बच्चों जिधर ज़्यादा इनपुट देना है, खुद टीचर होके ये 1 आवर में इनपुट्स देने वाला है। इससे आपको क्या समझना है, नारायणा इज डेड अगेंस्ट ऑफ ट्यूशन, कोचिंग क्लासेस, XYZ। बच्चों को जो उम्र में जो चीज चाहिए ये देने वाला नारायणा ऑर्गेनाइजेशन। वाई वी आर अगेंस्ट ऑफ ट्यूशन एंड क्लासेस, एक ही चीज है सर। आज के दिन जो बड़ा बड़ा ट्यूशन क्लासेस जो चला रहा, उधर जो क्लासेस में जाने वाला बच्चे सारे एक ही स्कूल से नहीं रहेगा, और स्कूल में अलग अलग स्कूल में अलग अलग लेसन्स चलता हुआ होगा, अलग अलग टीचर को अलग अलग तरीका से पढ़ाने का तरीका रहता है, और स्कूल में टीचर का पढ़ाने का तरीका एक रहता है, बच्चे मैशअप हो जाएगा। इसके लिए एक ही विनती है जो आप लोगों को, बट ऐसा मत बोलिए जून 3 तारीख को मैंने स्कूल भेज दिया सर, 4 तारीख को आके मेरे बच्चे को क्या सिखाया आप लोग। मिनिमम 3 to 6 months it takes the time to get habituated to the Narayana system, being a parent, being the student, being the teacher। पहले 3 से 4 महीने ऑब्जर्व कीजिए। आज के दिन मैं ऐसा नहीं बोलूँगा इधर जितना भी पेरेंट्स एडमिशन लिया सारे IITian बनेगा, सारे मेडिको बनेगा, नहीं तो सारे CA बनेगा। बट आज के दिन जो आपको बच्चों का जो स्थिति है, इससे 100 गुना अच्छा भेजूंगा। एज ए गुड सिटीजन इन ओवरऑल डेवलपमेंट वी विल डू। राइट नाउ इफ एनी पेरेंट इज हैविंग एनी क्वेरी, यू कैन फील फ्री टू डिस्कस। अगर कोई भी पेरेंट को कुछ क्वेरीज है पूछ सकते आप लोग, प्लीज। एनी पेरेंट, एनी पेरेंट इज हैविंग एनी डाउट। इससे मैं क्या समझना है, आपको कुछ समझ में नहीं आया या सब कुछ समझ में आया? आई एम नॉट अनेबल टू गेट इट। अगर कोई क्वेरीज नहीं है, यही डाउट अराइज होगा। एटलीस्ट कोई पेरेंट को कुछ डाउट्स नहीं है, एटलीस्ट थैंक्स बोल दिया तो खुश हो जाता।
सब लोग. If any parent is having any doubts, please feel free to. Hello, sir. I just wanted to ask, from the first day of the school, is there any medical facility will be given by school? Madam, definitely there will be a sick room. अगर कोई भी बच्चों का, I will try to answer in Hindi so that each and everyone will be comfortable. मेडिकल फैसिलिटीज रहेगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेडिकल फैसिलिटीज तो कोई स्कूल प्रोवाइड नहीं कर सकते. अगर आपका बच्चों को कुछ हेल्थ इश्यूज और सिग्निफिकेंट थिंग्स है, it is better to intimate that adopted teacher or the class teacher or the concerned vice principal and principal in notice. Okay, the basic medical facilities will be there. सर, कोई मेडिकल इशू है नहीं मेरी डॉटर को. आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म. आई एम नॉट टेलिंग दैट आपका बच्चों को कुछ है बोल के मैं भी नहीं समझ रहा हूँ. अगर किसी को बच्चों को इस तरीके से मेडिकल हिस्ट्री है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स कुछ चीजें छुपाने सोचता है, बट इट्स रॉन्ग. जब स्कूल रहेगा, अगर कोई भी मेडिकल इश्यूज, वेदर साइनस प्रॉब्लम, ओके, हाइपर एक्टिव किड्स, फिट्स आते रहेगा कुछ बच्चों को, ऐसा कोई भी चीज है, we request the parents to mention the clear medical history of the student so that we will take care at our level, and minimum medical facilities and the nurse will be available in the school. Thank you, sir. One more question, sir. Yes. From the first day, bus facility will be there? From first day, the first year bus facility will be there, not from the first day. First 3 to 4 days, the parents should take care. Once all the routes are set, all the parents are mapped with the system. From 10th of June, if 3 तारीख से स्कूल चालू होगा, 10 तारीख से हम लोग ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. थैंक यू. यस सर, प्लीज. हेलो. यस सर. मैंने आपका ये सारा जो ऑर्गेनाइजेशन आपके जितने भी सारे इंफॉर्मेशन दिया, इज द बेस्ट, इज ए गुड, क्योंकि मेंटली जितना इम्पोर्टेंस है वैसा फिजिकली भी होना चाहिए. आपके स्पोर्ट्स के बारे में कोई एक्टिविटीज़ है, जैसा देखा जाए तो जगह पे उतना स्पेस नहीं है. जैसे कोई अदर स्कूल में देखा जाए तो ग्राउंड बड़ा होता है, लेकिन वहाँ पे कोई ग्राउंड ज़्यादा दिखता नहीं है. तो उसके बारे में थोड़ा मेरे को डाउट. वेरी एक्सेलेंट क्वेश्चन सर. एक्चुअली हमारे लोग जो टाइम कंस्ट्रेंट, जो बारिश का भगवान ने आशीर्वाद दिया, 1 आवर डिले चालू किया, दे आर रनिंग आउट ऑफ ओके टाइम इम्पोर्टेंस के. सर, सब स्कूल्स में आपको स्पोर्ट्स एंड गेम्स रहेगा. नारायण में करिकुलम रहेगा विच वी कॉल इट एज एंड स्पोर्ट्स. एंड स्पोर्ट्स का करिकुलम इस तरीके से रहता है. फॉर एग्जाम्पल, कबड्डी खेलना है, किस तरीके से बच्चे कबड्डी खेल सकते हैं, इसका हाइट क्या रहना है, वेट क्या रहना है, इसका जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, इस तरीके से हम लोग ये करने वाला है सर. और आपने बताया था सर ग्राउंड छोटा है. सर 100% जो हमारे पास जो बेसिक ग्राउंड फैसिलिटीज रहेगा, मिनी फुटबॉल टर्फ ग्राउंड, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन and skating rink. These are the minimum facilities what we are going to give in the school. And another thing sir, as per the schedule, sir, for example, don't take otherwise. मेरा मुख्य उद्देश्य है बच्चों को जो स्कूल में पढ़ाई देना है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स देना है, डांस, म्यूजिक, योगा, कराटे, स्केटिंग, सारे चीज़ें देना है. बट फॉर एग्जांपल मेरे पास 7 एकड़ का फुटबॉल ग्राउंड है, 10 एकड़ का क्रिकेट स्टेडियम है, ओके, हॉर्स राइडिंग है, ठीक है. एक क्रिकेट मैच खेलने के लिए कितना समय लगता है और एक फुटबॉल गेम खेलने के लिए कितना समय लगता है और कितना प्लेयर्स इन्वॉल्व होना है, इसके लिए कितना कोचेस लगता है, ये सारे सुविधा मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ सर. बेसिक स्पोर्ट्स एंड गेम्स हम लोग ये करेंगे. अगर कोई भी बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगा हम लोगों को कोई भी स्पोर्ट्स एंड गेम्स में, यू विल आस्क द पेरेंट्स टू टेक एक्स्ट्रा ट्रेनिंग. सर हमारे पास इंटरनेशनल प्लेयर्स है, नेशनल प्लेयर्स है, स्टेट प्लेयर्स, तो हर
ब्रांच में से है, बट वी आर नॉट गिविंग 100% ट्रेनिंग टू देम सर. वी आर प्रोवाइडिंग बेसिक फंडामेंटल्स. बेसिक चीज़ें जो है हम लोग दे रहा है. अगर कोई भी बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, दे हैव टू टेक कोचिंग फ्रॉम आउटसाइड. वी आर अनेबल टू प्रोवाइड separate exclusive coaching for any of the students towards any sports and games. If we identify the talent, we are intimating the parent to have extra coaching. Thank you. Okay. Any parents? Yes sir. सर जैसे कोई बच्चा आपके जैसे क्लास 1 क्लास में एडमिशन ले रहा है, तो वो तो हैबिचुअल हो जाएगा, लेकिन जो डायरेक्ट 6 में आ रहा है या 7 है, उसको नारायणा सिस्टम से हैबिचुअल नहीं रहेगा, वो किसी दूसरे स्कूल से ही आएगा वो. तो उसके लिए कुछ एक ट्रांजिशन पीरियड होना चाहिए. पर व्हाट इन नारायणा? वेरी गुड क्वेश्चन सर. जो बच्चे आज के दिन आप लोग ने कितना तक ऑब्जर्व किया, जो भी क्लास में एडमिशन लिया होगा, टिल 7th स्टैंडर्ड हम लोग एडमिशन लेता है, क्योंकि उधर तक ही हम लोगों ने बच्चों को जस्टिफाई कर पाएगा बोल के. अभी अन्य स्कूल से बच्चे आ रहे हैं सर, नो डाउट. जो 3 तारीख से 12 तारीख तक पहले 10 दिन जो शेड्यूल रहेगा, दिट विल बी द ब्रिज कोर्स एंड फंडामेंटल्स. मैडम ने बताया था ब्रिज कोर्स बोलते हैं, जो गैप फिल करने के लिए. इसके बाद नागा साहिल सर ने क्लियरली एक्सप्लेन किया, नारायणा में जो बच्चे आएगा सभी को क्लासरूम टीचिंग एक ही है, बट जो इनको देने का क्वेश्चन पेपर पहले E1 लेवल, दैट इज बेसिक फंडामेंटल लेवल से हम लोग चालू करते हैं. पहले टीचिंग या ट्रेनिंग या वर्कशीट या एग्जामिनेशन जो रहेगा बेसिक फंडामेंटल लेवल से रहेगा. जो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसका एग्जांपल बताता हूँ सर. आपको लगता है जैसा 5 फिंगर इक्वल नहीं रहता है. फॉर एग्जांपल इधर 3 लोग बैठा हुआ है, हमारा बिल्डिंग ओनर, एक साहब ने 3 चपाती खाता है, एक साहब ने 2 चपाती खाता है, एक साहब ने 1 चपाती खाता है. अगर मुझे 3 लोगों को 3 चपाती दिया तो बाकी दोनों को क्या होता है, अनडाइजेशन होता है. ऐसा बोल के तीनों को एक ही चपाती दिया तो क्या होता है, भूखे रहता है. इसलिए जितना कैपेसिटी इनका इंटेक लेने का कैपेसिटी है, इस लेवल से डेवलप करते हैं. बट एक चीज तो जरूर बोल सकता हूँ, जो बच्चे जो स्थिति में हमारा पास आ रहा 100% इसको लेवल वाइज प्रमोट करके अच्छा स्थिति में लेके जाएंगे. सर देखिए, आज के दिन सभी लोग 100% नहीं आएगा, ऐसा बोल के कोई फेलियर नहीं रहना. ये नियम से हम लोग आगे चलते हैं. 10 days bridge course is sufficient? Sir, I rightly said after that basic fundamentals. देखिए सर, एक स्कूल बोलेगा तो NCERT की प्रोग्राम के साथ साथ नारायणा का कोर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बेसिक फंडामेंटल्स इन द सेंस द कॉन्सेप्ट, द बेसिक फॉर्मूला. 7th स्टैंडर्ड के पहले तक अगर आपने 6th स्टैंडर्ड में देखा सर, टोटल NCERT में आप लोग ने देखा तो हार्डली 100 फॉर्मूलास रहता है ईच सब्जेक्ट. 10 formulas in a day, 100 formulas in 10 days. इसके बाद जब पैरेलल JEE और नीट का तैयारी होता है, जब करिकुलम चालू होता है, तब ज़्यादा समय लगता है सर. एंड फॉर द स्टूडेंट्स जैसा जिसको आप एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, जो भी स्टूडेंट्स हैं, फिर उनके लिए बस फैसिलिटी क्या? सर देखिए, बस फैसिलिटी विल नॉट बी प्रोवाइडेड फॉर द रेमेडियल क्लासेस. फॉर द रेमेडियल क्लासेस जो 1st स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड तक बच्चे रहेगा, 3 बजे स्कूल छूटता है, 4:30 बजे e-Techno बच्चे को छूटता है. जो 6th स्टैंडर्ड से, इनको ट्रांसपोर्ट दे सकता हूँ सर. जो 6th 7th में बच्चे रेमेडियल क्लासेस अगर अटेंड करना है, ट्रांसपोर्टेशन विल नॉट बी प्रोवाइडेड. दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल इफ देयर आर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स. आज के दिन आई कांट डिबेट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ काउंट. ऐसा नहीं स्लो लर्नर्स मेरिट स्टूडेंट, अगर हर पेरेंट रिक्वेस्ट करेगा, हर पेरेंट को रेमेडियल क्लासेस देने के लिए तैयार हो, इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट. फॉर एग्जांपल सोलापुर से एक बच्चे हैं, तुलजापुर बाईपास से एक बच्चे हैं, पुणे बाईपास से एक बच्चे हैं, हैदराबाद बाईपास से एक बच्चे हैं. सभी को ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना है, इट्स नॉट पॉसिबल. अगर फॉर एग्जांपल जो जितना बच्चे मैक्सिमम एक रूट से कवर हो रहा, आई कैन प्रोवाइड द ट्रांसपोर्टेशन. दैट प्योरली डिपेंड्स एट द टाइम एंड सिचुएशन. Yes, sir. Sir, is there any different facility for the kids? Sir, actually we are not planning. Based on the request of the parents, there will be the canteen. There will be the canteen. Okay. ये कैंटीन नंबर ऑफ रिक्वेस्ट के हिसाब से we will plan it.
We will plan it based on the request of the parents. That is not owned or run by Narayana. एक अच्छा वेंडर है, अच्छा न्यूट्रिशन जो देने वाला है, इनको कैंटीन फैसिलिटी देते. अगर पेरेंट रिक्वेस्ट है, that we will coordinate with the canteen vendors. Sir, each and every school talks about JEE. स्टेट एग्जाम जो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट और यूपीएस है उसके स्कूल एमपीएस को क्यों नहीं रहेगा तो कब वेरी गुड सर. जो लीजिए सर मैं ले रहा हूँ, मैंने क्लियर एक दिन ये भी पड़ता है. गुड क्वेश्चन बाय द पेरेंट्स. अगर इधर कोई यूपीएससी के लिए is very very only with mathematics, only with mathematics. जो कोर रिलेटेड सब्जेक्ट्स रहेगा जो यूपीएससी के लिए, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी रहेगा, इट विल बी आफ्टर 12th स्टैंडर्ड पढ़ेगा जो डिग्री में रहेगा, इसका इंटरव्यू में रहेगा. और आज के दिन और अब मेजॉरिटी यूपीएससी तो दे आर फ्रॉम at the school level for making arithmetic and reasoning strong. We are going with parallel reasoning exams like JEE, CDF, those things. And आपको एक महत्वपूर्ण चीज बोलना है सर. Academy at Hyderabad. Here we got Narayana, not only school, colleges, medical college, we have engineering colleges, we have skills academy, college. कुछ एजुकेशन के मामले में ये कमी है. इसके कारण को भी पढ़ाने हर चीज से इनपुट आना, बच्चों को आगे लेके जा सकता हूं. आज के दिन नारायणा करिकुलम जो है, जो भले बच्चे एग्जाम लिखेगा सीबीएसई एनसीईआरटी पैटर्न में, बट जो मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूं, दैट इज द इंटीग्रेटेड करिकुलम नाउ स्टेट, सीबीएसई, आईसीएसई, आईजीसीएसई, आईबी. इसका कारण आप लोग पूछ सकते क्यों मैं पूरा 5 पढ़ाई करेगा क्या? नहीं. जो कॉन्सेप्ट जो एक बोर्ड से एक बोर्ड मिस हो रहा, इसको लेके इंटीग्रेट करके हम लोग इंटीग्रेटेड करिकुलम बनाया. क्यों? इसका कारण एक ही चीज है. आज के दिन कोई भी पेरेंट बता सकते क्या, अगर आपके बच्चे ने आगे जाके कोई भी तरीका से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करना है, कौन सा बोर्ड बेस्ट है? वेदर इट इज स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, आईजीसीएसई मतलब कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन यूके बेस्ड, इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, आईबी इंटरनेशनल पैरिकुलर करिकुलम जेनीवा. ऐसा 5 बोर्ड, सोलापुर में शायद 3 ही बोर्ड है, स्टेट, सीबीएसई, आईसीएसई. जब फॉरेन एजुकेशन के लिए पेरेंट्स इच्छा दिखाते हैं, देन दे गो विद सीआईई, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन और आईबी, राइट. अगर आज के दिन कोई भी पेरेंट बोल सकते क्या, अगर मेरे बच्चे ये बोर्ड में पढ़ेगा तो आगे जाके जिंदगी में कुछ भी बन सकते? नो, वी डोंट हैव आंसर. अगर ऐसा कुछ बोर्ड है, बाकी 4 बोर्ड एग्जिस्टेंस में रहते ही नहीं था ना, बाकी 4 बोर्ड की जरूरत ही नहीं था. इसका मतलब ये हर बोर्ड का एक एक सब्जेक्ट में एक एक गाइडेंस में महत्व है. बट नारायणा में हर बच्चे हर चीज में महत्व रहना है. दैट इज द रीजन नारायणा इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन which is conducting integrated curriculum.
ऐसा पूछ सकते हैं सर इंटीग्रेटेड करिकुलम आप बोल रहा कैसा चलाने वाला है? ये बोलने से अच्छा पिछले 17 साल से जो रिजल्ट है यही आंसर है सर आप लोगों को। एनीमोर? यस सर। ये बच्चों को जो ऑनलाइन क्लास जो ब्रिज कोर्स बोलते हैं ये कब से स्टार्ट होगा? सर ब्रिज कोर्स ऑनलाइन क्लास नहीं बोला सर मैंने। ब्रिज कोर्स 3 तारीख से 12 तारीख तक जो चलने वाला ये ब्रिज कोर्स है। अगर बच्चे तब तक कुछ वीडियोस देखना है एजुकेशन रिलेटेड, कुछ मॉक टेस्ट लिखना है, कुछ एनालिसिस देखना है, कुछ इंटरैक्शंस करना है, इसके लिए एनलर्न ऐप डाउनलोड किया तो अभी किया तो भी आपके सामने सब शामिल है सर। एक्चुअली इट्स ए पेड ऐप, ऑलरेडी आपको बताया होगा एडमिशन लेते वक्त, बट पेरेंट्स का सुविधा के लिए फ्री क्रेडेंशियल ऑलरेडी इट इज रोल्ड ऑन। अगर आप डाउनलोड किया तो आप देख सकते हैं सर। कितना 3 से 12 तक? 3 से 12 तारीख तक हम लोग ब्रिज कोर्स चलाने वाला है। दैट इज द ब्रिज बिटवीन द लास्ट ईयर एंड दिस ईयर। 3 तारीख मतलब जून 3 तारीख से सर फिजिकल में चलेगा, इट इज नॉट ऑनलाइन। ऑनलाइन क्लासेस हम लोग नहीं चला रहे। ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हैं आप लोग एनलर्न ऐप में बोल के बताएं। एनलर्न ऐप जो है डाउनलोड किया तो बच्चे अभी डेली 24 घंटे खेलने से अच्छा डेली 1 आवर 2 आवर जो एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस, मॉक टेस्ट, वर्कशीट सारे है। आप एक काम कीजिए सर, एनलर्न ऐप डाउनलोड कीजिए, इसको एक बार गो थ्रू कीजिए। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया 22 तारीख से सारे स्टाफ स्कूल बिल्डिंग में आपको दिखेगा, मॉर्निंग 8:30 टू इवनिंग 3 o'clock। इसके पहले कुछ पेरेंट्स विजिट करना है, कोई टीचर से मिलना है 9 o'clock टू 12:30। अभी जो मार्केटिंग ऑफिस है उधर मिलेगा सर, आप टीचर से मिलिए, आपको क्लैरिटी और अच्छा मिलेगा। एनी पेरेंट्स? स्टैंडर्ड के लिए एडमिशन मिलना सर 8th स्टैंडर्ड में नहीं ले सकता, इसको 2 कारण है। एक बच्चों को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, दूसरा सीबीएसई एफिलिएशन जो है 1 साल 15 महीने के बाद, मतलब पहले स्टेट बोर्ड एनओसी से आके सीबीएसई नोटिफिकेशन आके सीबीएसई एफिलिएशन के लिए 2 साल लगता है। अगर 8th में मैं लेऊंगा 9th स्टैंडर्ड में आपके बच्चों को सीबीएसई में एनरोल नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वी आर नॉट स्टार्टिंग 8th स्टैंडर्ड से। प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट एनी पेरेंट? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मुझे फॉरेन लैंग्वेज के लिए पूछना था। मैडम, एक्चुअली देयर इज अ डायलेमा इन द गवर्नमेंट इटसेल्फ, इन द सीबीएसई बोर्ड, वेदर टू कंटिन्यू। एक्चुअली हम लोग फ्रेंच दे रहा था पहले, जो डायलेमा चल रहा है आज के दिन मैं फॉरेन लैंग्वेज चलाऊँ, एक बच्चे सीबीएसई में एनरोल होता है 9th स्टैंडर्ड में, अगर तब तक फॉरेन लैंग्वेज रिमूव किया दिक्कत हो जाता है। इसका और एक भी कारण है, राइट नाउ महाराष्ट्र इज मैंडेट, पिछले साल से मैंडेट किया मराठी इज द मैंडेट लैंग्वेज, वी रेस्पेक्ट दैट, ओके। इसलिए फॉरेन लैंग्वेज अकोमोडेट नहीं कर पा रहा मैडम, वी गो विथ मराठी, हिंदी एंड संस्कृत। फॉरेन लैंग्वेज अभी तक जो लग रहा, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स लिया तो हम लोगों को इंक्लूड करने के लिए कोई अड़चन नहीं है मैडम। वी यूज्ड टू रन महाराष्ट्र में जो बोरीवली, अंधेरी ब्रांचेस है, महिंदर, उधर ऑलरेडी फॉरेन लैंग्वेज है जो पहले चालू किया था, बट फॉर पास्ट 5 years वी स्टॉप फॉरेन लैंग्वेज बिकॉज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट क्लियर and the state government has made Marathi as the mandate language, so we are not providing as of now foreign language। अगर कोई भी सुविधा मिला 100% प्रोवाइड करेंगे। Any parents? नमस्कार सर। अभी एक सर था कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम संदर्भ, इसका आंसर आपने जब इंट्रोडक्शन करके दे रहे थे उसमें में है 5 पॉइंट है, नारायणा दे सकता है। तो अगर हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट कौन से भी एग्ज़ाम में टॉप कर सकता है? पहला लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग,
अपना का सबसे बेस्ट लगा नारायण ने आर्ट से ही वो जो सर है जो सॉफ्ट स्किल्स के बारे में ये करते हैं, तो वहाँ से ये 5 पॉइंट अगर स्टूडेंट को नारायण स्ट्रांगली दे सकता है, इस आशावाद से हम बच्चे को इस नारायण में प्लेटफॉर्म में लाया है। अगर ये स्ट्रांगली हो सकता है, हर एक पेरेंट्स का बच्चा नारायण का स्टूडेंट नारायण का apart from that for enrichment अभी 3 महीने के बाद जब मैं मिलूंगा कोई पेरेंट, सोलापुर में हूँ, अचानक से कोई पेरेंट वो दिन स्कूल में है, जब मिलेगा ये पेरेंट बोलेगा सर थोड़ा थोड़ा तो नारायण के बारे में समझ रहा बट क्या चल रहा समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा समझ रहा बट क्या चल रहा नहीं समझ रहा। 6 महीने के बाद जब मिलेंगे तब बोलते हैं सर सब ठीक चल रहा, लग रहा सब ठीक चल रहा। 1 साल के बाद आप खुद बोलते हैं सर नारायण के बारे में आप जब ओरिएंटेशन लिया ये पॉइंट मिस किया था बट आप लोग ने ये चीज, इसके लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखियो। इसमें क्या है ना सर, main point. Okay, if you are having Thank you so much, sir. Now I request our Vice Principals, Mrs. Kamla Uthale and Mrs. Bhagyashree Mungapadir to deliver the vote of thanks. An inspiring quote by Sudha Murthy that vision without action is merely a dream. Action without vision is merely a passing time, but vision and action together can change the world. Good evening, ladies and gentlemen. I am Bhagyashree Munga Patil, Vice Principal of e-Champs. Good evening, everyone. I am Kamla Uthale, Vice Principal of e-Kids. It's an immense pleasure to introduce myself to deliver a vote of thanks on this auspicious occasion. Firstly, I would like to thank our Divisional General Manager, Mr. Ram Mohan Reddy, who has taken his time out to grace this occasion. A big thank goes to our building owners, Mr. Neelish Yadav and Mr. Saudagar Takle. My special thanks and gratitudes are coordinator Mr. Nagasai from high school, Ms. Savita from e-Champs, Ms. Leena, Ms. Neelam, and Ms. Anjali from e-Kids, who have been our guiding lights, imparting wisdom and knowledge to us and nurturing our young talents, and their unwavering support is going to be instrumental in our growth and development. And my heartfelt thanks to all the parents and invitees for their valuable participation and presence. My sincere thanks goes to our beloved principal, Mrs. Pavin Chamada, for guiding and supporting us all the time. I am also thankful to our Assistant General Manager, Mr. Karan Dhara, who have been supporting us for the entire program. I would like to thank all the staff members for their contribution to make this event successful. Once again, thank you everyone. Thank you so much. We shall sum up today's event with the Narayana anthem. I request everyone please raise for the Narayana anthem.
for the heritage team technician to please report near the stage. There's a technical issue. Team heritage. Mic technician, please report near the stage. Each day we rise and sing, progress is everything. We are the pride of India. Determination pays, there is no other way. We don't stop until we rise. We are Narayana, each high Narayana, march on Narayana. We are Narayana, each high Narayana, march on Narayana. We work hard every day, nothing gets in our way. We are the leaders of tomorrow's world. We'll climb the highest peaks, progress is what we seek, and we will always reach our final goals. We are Narayana, each high Narayana, march on Narayana. We are Narayana, each high Narayana, march on Narayana. We are Narayana. Thank you so much, everyone. I hereby declare that the event comes to a formal closure. My sincere thanks to all the parents and dignitaries for giving their valuable time to us. We end the session here. Thank you so much. ऑफिसचं कुठं आहे?